Good morning everyone. Gurukul Mains mock test जोड़ा previous week हेतिला तारो answers आज हमें discuss करिवा जो माने previous answer writing session रे connected नतले जो माने new join अछंती जो माने नुआ join करूचंती ये session को मु why and how it is important तो मु कहितली केमिति practice करिवे आ कोन पई एटा important previous session रे but जो माने नुआ अछंती ताको पई मु आउ थरे कहि दउची आंसर राइटिंग कोन पई important and I hope कि समस्ते mock test दउथिबे मु एटा assume करि कि चलुची कि समस्ते mock test दउथिबे आ जो माने देई नहंती से माने एठी जो concepts गुडा कुहा हबो ताकू निज नोट रे नोट डाउन करि परिबे आ mock test जेतबेले से माने देबे आकू जेतबेले सेल्फ एनालाइज करिवे कि जेतबेले एनालिसिस करि कि दिया हबो एथरे सेल्फ एनालिसिस करि परिबे मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड कर दिया जिवो आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन पीपीटी डाउनलोड कर देबे स्टार्ट करिबा आंसर राइटिंग इंपोर्टेंट कोन पई व्हाई इट इज इंपोर्टेंट व्हाई प्रैक्टिसिंग आंसर इज सो इंपोर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत एबे नोट्स पढुथिबे क्लास करूथिबे बही पढुथिबे फर्स्ट ऑफ ऑल knowing everything without practicing is not enough okay काहे ना एग्जाम रे गोटे पर्टिकुलर टाइम फ्रेम रे टाइम क्रंच रहउची वर्ड लिमिट रहउची आ तार भीतर यू हैव टू फ्रेम योर आंसर देन एंड देयर जदि आगरो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नथिबो बहुत किछि जानिथिले परे मध्य आंसर सेठी गोटे वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर सेठी लेखि परिबेनी तो टाइम रे फिनिश कले भी आंसर रो क्वालिटी भलो हबनी इफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना भी तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्टेंट कोन पई टू स्ट्रक्चर योर प्रिपरेशन एंड टू स्ट्रक्चर योर थॉट केमदी ऑर्गेनाइज करिवे ताकू इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन हिसाब रे लॉजिकली आंसर राइटिंग टीचेस यू दैट एठी मु कहिली गोटे टाइम क्रंच रे आ पर्टिकुलर वर्ड लिमिट रे लेखिबा भी बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम रे हार्डली 8 to 9 minutes per answer ही मिलिबो so practice helps you manage that time and avoid overwriting it will improve your articulation improve होबो माने it is not just what you write but how clearly you write एमती नहीं कि क्वेश्चन पढ़ी कि किछ गोटे रैंडम लिखि दे कि आसिले कि जहां भी नॉलेज अछि एमती किछ भी लिखि दे कि आसिले ताकू मिसई कि स्ट्रक्चर नहीं ऑर्गेनाइज नहीं एग्जांपल से सप्लीमेंटेड नहीं करंट अफेयर्स रे कोट करना हाती रिपोर्ट्स देना हाती तो क्लियर लागिवनी गोटे आंसर तो सेथिरे मार्क्स मिलिवनी ओके क्लियर आंसर लिखिले it can fetch you good marks आउ कोन पई इंपोर्टेंट टू डेवलप द एग्जाम टेम्परामेंट ओके तो गोटे प्रेशर रे अंडर रे आंसर राइट कले एमती नहीं कि घरे बसी कि मन इच्छा लिखुचंती दी लाइन एबे लिखले दी लाइन आउट के पढ़ी कि ता आउ आर पार्ट रा आंसर आउ आफ्टरनून रे करचंती मॉर्निंग रे करचंती एमती हेले आई मीन गोटे अंडर प्रेशर आंसर लिखि परिबेनी एग्जाम रे राइटिंग अंडर प्रेशर मॉक टेस्ट अपीयर कले कोन हबो एग्जाम प्रेशर को फेस करिबा सिखि जिवे इट विल डेवलप योर एग्जाम टेम्परामेंट सो राइटिंग अंडर प्रेशर बिकम्स इजियर जेतेबेले आपनकर ब्रेन विथ नॉलेज आउ हैंड विथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऑलरेडी कोऑर्डिनेटेड अछि लास्टली कौन पाई इंपोर्टेंट आंसर राइटिंग टू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज ठीक अछि रेगुलर प्रैक्टिस कोन शो करूची कि जो टॉपिक जोटा आपण भल से बुझी भी नाहंती यू डोंट अंडरस्टैंड वेल से गुडा आंसर राइटिंग सेशन मॉक आंसर एबे जो मु डिस्कस करबी सेठु भी जानि जिवे जदि आपण क्लासरूम कोर्स नै थिबे तो सेठु भी डाउट क्लियर करि परिबे तो एटा केतेबेले जणा पड़िबो आपण को वीक एरियाज जेतेबेले रेगुलर प्रैक्टिस करिवे रेगुलर प्रैक्टिस कले कोन हबो कि जणा पड़िबो कि अच्छा एई धरो आईआर क्वेश्चंस मु भल से अटेम्प्ट करि परनी कि इकोनॉमिक्स रो क्वेश्चन मु भल से अटेम्प्ट करि परनी
I have to focus on those areas more, so you can revise them better. Identification better हेले revision better हबो. ठीक अछि. एबे क्वेश्चन आसुची एबे तो जानी गले में why it is important. एबे होची कि how to start. First of all, pick the right source of questions. Picking right source of questions. आउ सोर्स टा ऑथेंटिक अच्छी कि नहीं सेटा जानिबे केतबेले जो एग्जाम पई प्रिपेयर करूचंदी धर ओपीएससी मेंस पई की प्रिपेयर करूचंदी तो तार सबुठारु ऑथेंटिक सोर्स होची तार ओन पीवाईक्यू तार ओन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जोडा ओपीएससी निजे फ्रेम करूची ताकू देखि के आईडिया लगेबे कि क्वेश्चंस केमिति सेट होची को एरिया रो बेसिक क्वेश्चन पचारुची को सब्जेक्ट रो को टॉपिक रो बेसिक क्वेश्चंस आसुची एंड अनदर ऑथेंटिक सोर्स इज योर मॉक टेस्ट जमी गुरुकुल मॉक टेस्ट से गला तो से माने ऑलरेडी पीवाईक्यूज एनालाइज करिकी करंट इवेंट्स कोन चलीची को टॉपिक्स इंपोर्टेंट तो से हिसाब रे मॉक क्वेश्चंस फ्रेम होची तो मॉक टेस्ट देले आउ निज सेल्फ स्टडी रो टाइम बाहर करिकी पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कले यू आर सॉर्टेड नाउ यू आर गुड टू गो. सेकंड हाउ टू प्रैक्टिस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. एबे सोर्स मिली गला देन यू हैव टू understand the questions. Randomly question पढ़िले किछि हबनी. You have to break the question into parts. Like question रे बहुत keywords थाए जेमति question रे discuss हैला बहुत question रे कहिथिबो critically examine बहुत question रे कहिथिबो examine ए certain keywords को भलसे बुझी कि से question को सेमती address करिबा को पड़िबो. Okay, you have to identify the demand of the question कि question पचारुची कोन what it is actually asking. Then make 1 minute structure. धर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करूचंदी गोटे स्ट्रक्चर माइंड रे रखी कि चली थिबे कि मो आंसर रो फ्रेमवर्क कोन हबो गोटे स्केलेटल स्ट्रक्चर तार 1 minute structure. Plan your answers into most preferably into IBC, which is introduction, body and conclusion in your mind or on rough note रे भी ताकू नोट डाउन करी रखी थिबे हैला. आउ जते बेले आंसर लेखुचंदी ताकू पैराग्राफ वाइज रे न लेखि के बुलेट पॉइंट्स बे सब हेडिंग्स देई कि लेखले सेतरे क्लैरिटी बढ़े गोटे ऑर्गेनाइज्ड लागिबा आंसर क्लीन आंसर गोटे जहा को कुआ जाय. ओके देन राइट विद इन द वर्ड लिमिट जोटा मु कहली 150 to 250 वर्ड्स जहाँ भी क्वेश्चन डिमांड थी से हिसाब रे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी एग्जाम रे से हिसाब रे आंसर लिखिबे. देन रिव्यू एंड सेल्फ इवैल्यूएट जहाँ भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करूचंती आंसर राइटिंग प्रैक्टिस परे मार्क्स भलो आसु बा न आसु देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. एटा सब बेले मन रखिबे देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. Always room for improvement. This is very important. आंसर लिखी देले तार मॉडल आंसर आपन को मिलिबो तो मॉडल आंसर्स रे कोन ताकू सेटा देखिबे कि ता तुलना रे को इन्फॉर्मेशन आहुरी देई पारि थांते कि आपन को नोट्स रे से इन्फॉर्मेशन ता मिसिंग अछि तो सेटा से मॉडल आंसर बाहर करी कि नोट्स रे नोट डाउन कर देबे आ आंसर रे से हिसाब रे सेल्फ एनालाइज करिवे कि वेयर योर आंसर लाइज अकॉर्डिंगली. एटा स्ट्रक्चर ठीक से हेची कहा परे कोन दिया जिबा दरकार एग्जांपल्स दिया अछि कि डाटा अछि कि नहीं सपोर्ट करिबा को आंसर को एटा सेल्फ इवैल्यूएट करी कि जानि जिबा. तो किछिटा एक्स्ट्रा टिप्स जेमति कि गोटे सेपरेट नोटबुक रखिबे और यूज योर टेस्ट सीरीज कॉपीज ताकू गोटे सेपरेट फाइल किंबा नोटबुक रे रखिबे टू जॉट डाउन और नोट डाउन योर मिस्टेक्स बा को एरिया रे इम्प्रूवमेंट हेई परिबो. देन वर्क ऑन दैट. तो सेथिरे कोन हबो कि एग्जाम हॉल रे जो भूलटा करि थांते सेटा आउ करिबेनी. रीड योर मॉडल आंसर्स बट डोंट कॉपी ब्लाइंडली. आई वुड से डेवलप योर ओन स्टाइल. समस्तकर नुआ स्टाइल अछि एमती नै से तो फिर गोटे मगअप करला भलिया गोटे घोसिला भलिया हेई जिवो. मॉडल आंसर्स आर फॉर रेफरेंस ओनली.
जदि मॉडल आंसर्स को ब्लाइंडली घोषिबा को दिया जाउ थांदा ताहले आपनको पई एमती आंसर राइटिंग सेशंस केबे प्लान हेई न थांदा यूट्यूब रे राइट मॉडल आंसर्स आर फॉर रेफरेंस एंड द आंसर राइटिंग सेशंस आर फॉर क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट्स कि आंसर को अप्रोच केमती करबे एमती क्वेश्चन अछि तो आंसर को केमिति अप्रोच करबे केबे भी मॉक टेस्ट रु एटा एक्सपेक्ट करिवेनी कि जहा जहा मु मॉक टेस्ट देइची सेमती पूरा as it is 100% पूरा सेमती क्वेश्चन आसी जीवो एमती भी क्वेश्चंस आसीबो जोडा कि लागिवो कि माने एटा तो मु पढिनी ए जिंसटा पई तो एतेटा नॉलेज नाही तो सेटा केमिति आसीबो सेटा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करबे आंसर राइटिंग सेशंस ऊपर जो वीडियोस रहउची ताको अटेंड करिवे निजे सेल्फ इवैल्यूएट करिवो निजे सेल्फ रिव्यू करिवो ताहले सेटा बुझा पड़िबो आ सेई अंडर एग्जाम प्रेशर you can frame your own answers then and there and fix a time ठीक अछि गोटे टाइम रखिबा दिन रे कि एथिरु एथि कि गोटे आंसर तो जदि टेस्ट भी नाही मु पर डे मु गोटे आंसर जदि टेस्ट नाही तो मु निज सेल्फ स्टडी रो टाइम बाहर करके पर डे मु गोटे आंसर लिखिबी ही लिखिबी आ एतिकी भीतर लिखिबी फर्स्ट क्वालिटी ऊपर फोकस करिवो स्पीड ऊपर फोकस न करिकी क्वालिटी वंस इंप्रूव हे जिवो देन you can improve your speed जदि slow handwriting अच्छी तो से practice रे ठीक है जो it's not a big issue if you are practicing and working hard enough तो quality ऊपर first focus करिवो तो एठु हमें कौन जानले how to start small but be consistent बुझिएला ओके देन आमे हम फर्स्ट क्वेश्चन को आजिर जिबा आजिर आंसर राइटिंग सेशन रे फर्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन कोन कहिछि समस्त रीड करंतु थरे सेल्फ रीडिंग थरे करंतु तापरे मु एबे कहिबी क्वेश्चन कौन कहिछि क्वेश्चन कहिछि एग्जामाइन करो एटी देखो कीवर्ड एग्जामाइन हाउ मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी कैन बी अलाइन्ड टू एक्सेलरेट ग्रीन फाइनेंसिंग एंड प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया मॉनेटरी आउ क्रेडिट पॉलिसी केमिति ए दियन सिनर्जिस्टिकली अलाइन है कि कहा को एक्सेलरेट करि परिबे कहा को इंक्रीज करि परिबे प्रमोट करिवे ग्रीन फाइनेंसिंग को प्रमोट करिवे आउ ऑब्वियसली सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करिवे कोठी इंडिया रे ठीक अछि तो आमे फर्स्ट केमिति अप्रोच करबा इंट्रोडक्शन इन दिस सेशन मुई सेशन रे कोन कहबी कि प्रति पार्ट जेमति आईबीसी हैला इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन को केमिति आकू इन अ सर्टेन फ्रेमवर्क ताकू अटेम्प्ट करिवे आउ कॉन्सेप्ट्स बुझेबी मु and for details I will also discuss the details for more details you have to refer your model answer the pdf will be provided इंट्रोडक्शन एटी इंट्रोडक्शन रे सबले इशूटा बुझबे इशूटा कोन कहि छै कि फर्स्ट मु एटी कहिली केमिति माने सिनर्जिस्टिकली से माने काम करबे इंट्रोडक्शन रे इंक्लूड कोन करि परिबे एमति इंक्लूड करि परिबे कि इंडिया को एबे कोन कहउचनी इंडिया इज नाउ द थर्ड लार्जेस्ट emitter of what of a carbon dioxide in the world किंतु आमरो थर्ड लार्जेस्ट emitter of CO2 हेले भी आमरो किछि बड़ गोल्स रही छी and what are the goals होची net zero emission by 2070 आउ net zero emission रहिला 2070 जाय करबे आउ 50% जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी एबे प्रोड्यूस होची से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ना 50% कोठु आनिबो आमे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स रु आनिबो जेमदि सोलार हेगला विंड हेगला आ को पर्यंत एटा हे जिवो 2030 जाके हे जिवो तो ए जो गोल रहिला ए जो ग्रीन फाइनेंसिंग और जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ टाइप रो जो गोल रहिला टू रीच दिस गोल्स इंडिया को कोन इंडिया को दरकार हाई अमाउंट ऑफ अ लार्ज सम ऑफ मनी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी अराउंड एमती देखिया बोले $10 trillion दरकार बाय 2070 एतिके अमाउंट रो दरकार एज आ ये रिपोर्ट के पब्लिश करची रिपोर्ट पब्लिश करची एज पर आरबीआई 2023 रिपोर्ट
You can use this report, datas, facts in introduction itself. एत्ते सारा दबा दरकार नहीं कि आ भितर किछि भी गोटे जदि डाटा किंबा फैक्ट की रिपोर्ट रो फाइंडिंग इंक्लूड कर दउचंदी इंट्रोडक्शन रे, इट गिव्स द एग्जामिनर द कॉपी इवैल्यूएटर अ क्लैरिटी की माने हां माने पिला पाठ जानि छि एंड माने सेही हिसाब रे बॉडी आउ कंक्लूजन वे फॉरवर्ड एगुडा भी तारा स्ट्रक्चर्ड थिबो. It creates a good impression, right? So एथिपाई कौन दरकार, दैट्स व्हाई एट जो अच्छी ग्रीन फाइनेंसिंग होची जो मनी इन्वेस्ट हबो. ग्रीन फाइनेंसिंग माने कौन, ए जो मनी इन्वेस्ट हबो कोउथिरे, इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स. इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स से जो मनी इन्वेस्ट हबो ताकू कहआ जाय ग्रीन फाइनेंसिंग. तो एथिपाई ग्रीन फाइनेंसिंग बहुत इंपोर्टेंट हे जाउची. सो एठी जो कहिला हमर इंडिया रो मॉनेटरी पॉलिसी जोटा कि डिसाइड करे आरबीआई एंड क्रेडिट पॉलिसी. क्रेडिट पॉलिसी कौन, द रूल्स फॉर गिविंग लोन्स. क्रेडिट पॉलिसी माने कौन, रूल्स फॉर गिविंग लोन्स. ठीक अछि. एमाने कौन करबे, दे विल हेल्प इन एनकरेजिंग व्हाट, द ग्रीन प्रोजेक्ट्स लाइक रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एटसेट्रा. इंट्रोडक्शन रे ए सब पार्ट इंक्लूड कर परबे. एबे बॉडी रे हमें कोन इंक्लूड करबा, बॉडी रे हमें एड्रेस करबा कि ए पॉलिसी गुडा हेल्प केमती करबा. मॉनेटरी पॉलिसी, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनेटरी पॉलिसी केमती हेल्प करबो इन ग्रीन फाइनेंस. मॉनेटरी पॉलिसी एंड ग्रीन फाइनेंसिंग. मॉनेटरी पॉलिसी केमती हेल्प करबो, मॉनेटरी पॉलिसी के डिसाइड करे, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई डिसाइड करे. टू व्हाट, टू मैनेज द monetary flow in the economy. ठीक अच्छी, लाइक इंटरेस्ट रेट हेगला, इन्फ्लेशन हेगला, लिक्विडिटी हेगला. तो ये ग्रीन फाइनेंसिंग रे पर्टिकुलरली हेल्प केमती करिवो, से फर्स्ट कौन करिवो, इट कैन लोअर द इंटरेस्ट रेट्स फॉर ग्रीन प्रोजेक्ट्स. जहाँ भी ग्रीन प्रोजेक्ट हेगला कि रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा फाइनेंस करे प्रोजेक्ट हेगला, सोलर एनर्जी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट हेगला, से ता ऊपर जो जहाँ भी पैसा दरकार से पाएंगे से ता ऊपर इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज कर दबो. तो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कले कौन हबो, इन्वेस्टमेंट बढ़िबो. इट विल इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन सच प्रोजेक्ट्स. सो इट विल इंड्यूस व्हाट, इट विल इंड्यूस ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर. Lowering the interest rate for green project, it will make it cheaper for companies to build such projects, to build solar plants, EV factories, etc. Second केमती हेल्प करि परिबो, गोटे टर्म अछि, गोटे ग्रीन क्वांटिटेटिव ईजिंग. ग्रीन क्वांटिटेटिव ईजिंग QE. आरबीआई कौन करे आ अंडर रे, आरबीआई से किणे कहा को, ग्रीन बॉन्ड्स. जो लोन इको फ्रेंडली ग्रीन बॉन्ड्स, दैट आर द लोन्स रेज्ड फॉर, जो लोन गुड़ा इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट में रेज होता है, लोन्स रेज्ड फॉर इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स. कहा ठारू किनिबो, फ्रॉम कंपनीज और गवर्नमेंट ठारू से कौन करिबो, ग्रीन बॉन्ड किनिबो. बॉन्ड किनिबो जेतेबेले से रिटर्न रे कौन दबो, मनी दबो. मनी दबो कहा को, कंपनी को. तो कंपनी ये मनी नहीं कि कौन करिवे, से फर्दर ए ग्रीन प्रोजेक्ट रे इन्वेस्ट करिवे. So RBI can through green quantitative easing, it can promote green financing. आउ केमती हेल्प करिवो से, इन्फ्लेशन टारगेटिंग. इन्फ्लेशन टारगेटिंग विथ climate risks.
या माने कौन नॉर्मली आरबीआई कौन करे इट ट्रैक्स इन्फ्लेशन ड्यू टू फ्यूएल हे गला फूड प्राइसेस रे इंक्रीज आसी गला अब्रप्ट इंक्रीज तो सेथिरे से इन्फ्लेशन को ट्रैक करे किंतु एथिरे कौन होची क्लाइमेट चेंज कैन ऑल्सो इम्पैक्ट इन्फ्लेशन ये इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करि परिबो लाइक क्रॉप फेलियर हे गला फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज द्वारा जदि हीट वेव्स फॉर एग्जांपल क्रॉप फेलियर ड्यू टू व्हाट ड्यू टू हीट वेव्स हला सो आरबीआई कौन करिबो इट कैन आल्सो इंक्लूड क्लाइमेट रिस्क इन इन्फ्लेशन मॉडल्स एमती रे मॉनेटरी पॉलिसी कैन सपोर्ट ग्रीन फाइनेंसिंग एंड सस्टेनेबल ग्रोथ आउ केमती करि परिबो ग्रीन रेपो ऑपरेशन थ्रू green repo operations. Now what is green repo operations? रेपो रे कोन वे रेपो रेट एटी समस्त जानथिबे इकोनॉमिक्स क्लास करथिबे बैंक्स कोन करंती से माने कोन करंती मनी नियंती आरबीआई थरो आरबीआई लेंड्स मनी टू बैंक्स बाय बैंक्स टेक मनी फ्रॉम द आरबीआई बाय गिविंग व्हाट बाय गिविंग सिक्योरिटीज तो ए जो मनी आरबीआई बैंक्स माने को लेंड करे ता ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगे ताको कहा जाए रेपो रेट तो आरबीआई एथिरे कोन करि परिबा आरबीआई कैन अलाउ देम टू यूज ग्रीन सिक्योरिटीज तो बैंक माने जो सिक्योरिटी जी सेक्स प्रोवाइड करंती आरबीआई को टू टेक मनी फ्रॉम आरबीआई बैंक माने ग्रीन सिक्योरिटीज आज अगर ग्रीन सिक्योरिटीज भी यूज करि परिबे to have money from RBI can allow them to use green securities माने कोन फॉर एग्जांपल सोलर बॉन्ड्स हे गला एगुडी को भी यूज करिकी बैंक माने आरबीआई ठरो पैसा नहीं परिबो तो एथिरे कोन हबो एथिरे दे विल दिस विल मोटिवेट whom motivate the banks to invest more in green loans सेकेंड पार्ट को आसे एटा तो जानले बे मॉनेटरी पॉलिसी केमिति हेल्पफुल हे परिबो एथिरे एबे जानिबा क्रेडिट पॉलिसी को हमें ग्रीन फाइनेंस सहित केमिति लिंक करबा क्रेडिट पॉलिसी माने होची जो रूल आरबीआई करिछि टू व्हाट टू गाइड हाउ बैंक गिव लोन्स याको को जाए क्रेडिट पॉलिसी तो एटा ग्रीन सेक्टर्स को केमिति सपोर्ट करि परिबो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पीएसएल जाओ कहउछन्ती आरबीआई ऑलरेडी बैंक मान को फोर्स करे टू लेंड टू सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर एमएसएमई एटसेट्रा आरबीआई एबे कोन करि परिबो एक्स्ट्रा कि इट कैन नाउ इंक्लूड रिन्यूएबल एनर्जी ए जो पीएसएल रे रिन्यूएबल एनर्जी को इंक्लूड करि परिबो जेमति कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हेगला ऑर्गेनिक फार्मिंग एकु भी पीएसएल अंडर रे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अंडर रे इंक्लूड करि परिबो तो बैंक विल हैव गिव मोर लोन्स टू ग्रीन प्रोजेक्ट्स सेकंड ग्रीन टैक्सोनॉमी एंड गाइडलाइंस थ्रू ग्रीन टैक्सोनॉमी एंड गाइडलाइंस एबे आ थ्रू रो केमिति हेल्प हे परिबो ग्रीन प्रोजेक्ट रो फर्स्ट ऑफ ऑल को गुडा ग्रीन प्रोजेक्ट अंडर रे फॉल करंती तार गोटे क्लियर डेफिनेशन थिबा दरकार क्लियर डेफिनेशन तो बैंक्स को जाना थिबो कि को प्रोजेक्ट माने एलिजिबल फॉर ग्रीन लोन्स तो इट आल्सो हेल्प्स टू जज द क्रेडिट रिस्क प्रॉपर्ली जदि गोटे प्रॉपर टैक्सोनॉमी और गाइडलाइंस फॉलो होतिबो तो बैंक माने जानि परिबे कि को लोन गुडा एलिजिबल टू फिगर आउट द एलिजिबिलिटी करेक्ट आउ केमती हेल्प करि परिबो क्रेडिट पॉलिसी ग्रीन क्रेडिट गारंटी स्कीम ग्रीन क्रेडिट गारंटी स्कीम
गवर्नमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल गारंटी दबो बैंक को गोटे गारंटी दरकार बैंक्स मान को एक तो एनपीए एते चलची तो बैंक मान को भितरे एटा डर कि जदी डिफॉल्ट हे गला लोन्स तो एठी गारंटी प्रोवाइड करिवो कि गारंटी प्रोवाइड करिवो एठी गवर्नमेंट टू होम टू बैंक्स कोथि पई कि से माने लोन दियंतु फॉर ग्रीन प्रोजेक्ट तो एटा एथिरे कोन हबो कि बैंक्स मानकर जो फियर रोजी फियर ऑफ लॉस सेटा डिक्रीज हबो आउ से माने एनकरेज हेबे ग्रीन प्रोजेक्ट को लोन दबा पई अंडरस्टूड लास्टली डायरेक्टेड lending targets डायरेक्टेड लेंडिंग टार्गेट्स एबे हमें प्रीवियस स्लाइड रे देखले जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग रहिला जस्ट लाइक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पीएसएल जहार सब टार्गेट्स रहउची जेमती एग्रीकल्चर हेई गला एमएसएमई हेई गला सेमती ग्रीन लोन्स की ग्रीन फाइनेंसिंग पाई की भी सेमती जदी सब टारगेट सेट कर दिया जिवो तो एथिरे कोन मेक श्योर होबे इट मेक श्योर मिनिमम लोन अमाउंट गोस टू क्लाइमेट फ्रेंडली सेक्टर्स करेक्ट डायरेक्टेड लेंडिंग टार्गेट्स आकु कुआ जाय थर्ड पार्ट एड्रेस करबा क्वेश्चन रो अदर रेगुलेटरी एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट रे हमें देखिबा कि आरबीआई रो 2022 गाइडेंस ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस गोटे फ्रेमवर्क आसीतिला तो सेथरे थिला कि आरबीआई एथिरे अछि आरबीआई गेव व्हाट आरबीआई गेव अ फ्रेमवर्क इन 2022 फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस तो सेथरे कुहा जाईची कि बैंक्स मस्ट इंक्लूड ईएसजी फैक्टर्स कोन बैंक्स मानकू ईएसजी फैक्टर्स इंक्लूड करा जबाउ कुहा वाला ईएसजी फैक्टर कोन ईएसजी रो फुल फॉर्म कोन ई फॉर एनवायरनमेंट एस फॉर सोशल एंड जी फॉर गवर्नेंस इन देयर लोन डिसीजन जहां भी से माने लोन डिसीजन क्रेडिट डिसीजन नेबे सेथिरे से माने ईएसजी फैक्टर को इंक्लूड करबे दे मस्ट आल्सो डिस्क्लोज क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क मध्य डिस्क्लोज करबे देन सस्टेनेबल फाइनेंस रोडमैप सस्टेनेबल फाइनेंस रोडमैप रे कोन रहउची इंडिया शुड मेक अ नेशनल रोडमैप लाइक ईयू रे जेमती गोटे अछि यूरोपियन यूनियन रे तांकर अछि गोटे सस्टेनेबल फाइनेंस रोडमैप तो इंडिया को भी सेमती गोटे सस्टेनेबल फाइनेंस रोडमैप करिवा दरकार so that it will give clear direction to whole financial system for direction purpose आउ गोटे रहउची लास्ट ग्रीन बॉन्ड मार्केट now what is green bond market RBI और SEBI आपको को माने करि परिबे RBI प्लस SEBI त कौन करिवे ग्रीन बॉन्ड्स को प्रॉपरली प्रमोट करिवे और रेगुलेट करिवे जो ग्रीन बॉन्ड्स रहिला बोथ सांग ही कि से माने ग्रीन बॉन्ड्स को प्रमोट करिवे और रेगुलेट करिवे तो एथिरे कौन हबो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस अधिकारु अधिका कंपनीज फंड रेज करिवे फॉर ग्रीन प्रोजेक्ट्स fundraising will increase for green projects आउ इन्वेस्टर माने कोन करबे इन्वेस्टर will also get confidence इन्वेस्टर माने को भी कॉन्फिडेंस मिलिबो जेतबेले एम्प्टी बॉडी इंक्लूड थिबो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वे फॉरवर्ड हमें डिस्कस करबा काहे कि ना एठी पचारची कि माने केमिति माने सिनर्जिस्टिकली मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट पॉलिसी केमिति इन अ हैंड हेल्ड मैनर सिनर्जिस्टिकली माने एका संगे केमिति वर्क करिवे
तो एथिपाई way forward, giving way forward in your answer is important. What needs to be done or way ahead? First, the Green Finance Development Authority. Green Finance Development Authority. एथिरे कोन होची गोटे कॉमन प्लेटफॉर्म बना जिवा दरकार टू कोऑर्डिनेट जेमती बॉडीज रहिला आरबीआई, सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फाइनेंस, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रहिला, आंकु इंक्लूड करिके गोटे कॉमन प्लेटफॉर्म करिवे दरकार ग्रीन फाइनेंस डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर प्रोसीडिंग विथ ग्रीन फाइनेंस एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ. So this is important, this step is important. Second, green credit registry. Green credit registry is important. गोटे डेवलपमेंट अथॉरिटी हे गला एबे गोटे रजिस्ट्री रहबा इंपोर्टेंट. रजिस्ट्री रहबा कोथि में इंपोर्टेंट कि से माने ट्रैक करिवे, कहाउ ट्रैक करिवे, जहां भी ग्रीन लोन्स दिया जाउची टू चेक व्हाट, टू चेक परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस. थर्ड कोन हवा दरकार, गिव इंसेंटिव टू प्राइवेट कंपनीज. केवल पब्लिक कंपनीज, पब्लिक सेक्टर तो एथरे इंक्लूड है कि गोल को इंडिया रा जहा गोल रही 2070 जाके सेटा तो फुलफिल करियो बनी. एथरे प्राइवेट कंपनीज मानकर भी फॉर एफिशिएंसी पर्पसेस आंकर इंक्लूजन भी इंपोर्टेंट. गिव फॉर दैट, गिव इंसेंटिव्स टू प्राइवेट कंपनीज. तांको इंसेंटिव देले कोन हबो, टैक्स बेनिफिट मिलबो और शेयरिंग रिस्क टू इंक्रीज. एथरे कोन हबो, टैक्स बेनिफिट, एथरे टैक्स बेनिफिट मिलबो. देले कोन हबो, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हबो. इन्वेस्टमेंट आउ कॉन्फिडेंस बढ़िबो कहारो, प्राइवेट कंपनीज मानकर, एंड क्लाइमेट एक्शन निया जाई परिबो अकॉर्डिंगली. फोर्थ, ट्रेनिंग फॉर बैंक्स एंड रेगुलेटर्स. Training for banks and regulators, so that semane kon karibe, so that they can understand climate risk को ठीक से semane बुझी परिबे and smart lending decision semane नहीं परिबे. conclusion रे कोन ऐड करिवे, conclusion रे, conclusion टा एमती गोटे and your conclusion should always end on a positive note. conclusion must be optimistic. conclusion रे एमती एटा ऐड करि परिबे कि इंडिया कैन यूज इट्स मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी एज पावरफुल टूल्स. जोडा क्वेश्चन रा डिमांड अछि सेही हिसाब रे ही conclusion को फ्रेम करिवे on a positive note. क्वेश्चन रे मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट पॉलिसी इंक्लूड अछि, तो conclusion रे भी एदिटा टर्म्स रहिबा दरकार. इंडिया कैन यूज इट्स कहा को, मॉनेटरी पॉलिसी एंड क्रेडिट पॉलिसी कोथि पई एदिटा पावरफुल टूल को से कोथि पई यूज करिवो, फॉर बिल्डिंग अ क्लाइमेट resilient and sustainable economy, and with the right institutions, planning and support. आउ एटा केते बळे हबो, right institution plus planning आउ support रे इंडिया कौन करि परिबो. इंडिया हैज द पोटेंशियल टू बिकम अ लीडर. लीडर इन व्हाट, लीडर इन ग्रीन फाइनेंस इन द डेवलपिंग वर्ल्ड. फिनिश्ड फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन को जिबा. रीड द सेकंड क्वेश्चन. हां, सेकंड क्वेश्चन कोन कहै छै, टॉपिक अछि रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऊपर और क्रेडिट पॉलिसी ऊपर, फॉर व्हाट, इन एंश्योरिंग इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया. फर्स्ट हमें देखिबा इंक्लूसिव ग्रोथ कोन.
जोटा को इंक्लूसिव ग्रोथ जानिले ही तार डेफिनेशन की किसी डाटा फैक्ट ताको इंट्रोडक्शन रे इंक्लूड करि परिबे. सो इट इज वेरी इंपोर्टेंट टू नो व्हाट इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स. क्वेश्चन कौन कहला कि एनालाइज द रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड क्रेडिट पॉलिसी इन एंश्योरिंग इंक्लूसिव ग्रोथ इन इंडिया. इंक्लूसिव ग्रोथ कौन? इंक्लूसिव ग्रोथ माने कौन? Growth that benefits everyone. Growth that is not discriminative. Not just rich. ताकू कहा जाए जोटा समस्त प्रति से समस्त ग्रोथ चाहूचे सेटा कहा जाए इंक्लूसिव ग्रोथ. एमती नहीं कि केवल रिच की पर्टिकुलर किसी सेक्शन किसी सुपीरियर सेक्शन मानकर ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हबो. नो, दिस इज नॉट इंक्लूसिव ग्रोथ. ग्रोथ दैट बेनिफिट्स एवरीवन. जो ग्रोथ रू जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रू समस्त एंटायर पॉपुलेशन रो ग्रोथ होची इन सर्टेन रिस्पेक्ट ताकू कहा जाए इंक्लूसिव ग्रोथ. आ इंक्लूसिव ग्रोथ रे कोन हुए? इट रिड्यूसेस poverty. Poverty reduce haba, jobs by employment rise karibo, more jobs create haba. आउ कोन हबो एथिरे poverty reduce हेले आउ jobs create हेले कोन हबो? rich आ poor भितरे जो gap exist करूची that gap will decrease. Not only rich and poor, men and women, that gap will also decrease. And rural and urban areas रो जो parity रोची जो gap रोची सेटा भी decrease करिवो. And it will close the gap between these sections. India कौन? India is the 5th largest economy. But problem कौन रोची इंडिया रे कि still 20% of its population, 20% of people are in multidimensional poverty. Multidimensional poverty. According to what? Global report एठी आसी गला. Note करिवे Global Multidimensional Poverty Index 2023. ठीक अछि. For example, जेमति कि controlling the price of what? Onion गला, onion, rice, basic amenities जो अछि, basic grocery items जो अछि, और LPG price rise. एथिरु कोन हबो? It helps in poor families manage their household budgets. Second केमिति हेल्प करि परिबो? Growth oriented interest rate करिकरी. Growth oriented interest rate. Growth oriented interest rate. RBI, first of all, RBI से reduce करि परिबो repo rate को. अंडर रे RBI reduce करिबो repo rate को. Repo rate माने कोन? जो interest rate at which it lends to the banks. I made it clear in the previous slides also. This makes loans what? This makes loans cheaper. Loans cheap हे जिवो. Loans cheap हेले कोन हबो? Investment बढ़िबो, business investment. Then it will create job, especially in what? In rural areas and informal sectors. Third, liquidity support. Liquidity support to banks and NBFCs. Liquidity support माने monetary support. ठीक अछि. कहा को दबो? बैंक माने को आउ NBFCs. NBFC रो full form कोन? Non banking financial. NBFC or NBFI, non banking financial companies or non banking financial institutions. RBI कोन करिवो? Extra money provide करिवो. RBI will provide extra money. Extra money to whom? To banks and to NBFCs. तांको पाखरे एक्स्ट्रा लिक्विडिटी बा एक्स्ट्रा मनी आसले से माने कोन करिवे? से माने तांकर लेंडिंग फंक्शन को दे कैन लेंड मोर.
more lending will be observed. So एथिरे टारगेट सेक्टर्स कौन रहउचंदी से माने जो लेंड करिवे more money. Who are the target sectors? The sectors that need more money to grow. For example, MSME, farmers, low income housing. आउ एई तीनिटा को अधिक लोन मिलिले कोन हबो एई तीनिटा सेक्टर ग्रो कले कोन हबो दे विल जनरेट ग्रास रूट लेवल जॉब्स. Lastly कोन हबो डेवलपमेंटल रोल ऑफ आरबीआई. Developmental role of RBI. Developmental role of RBI under a कौन हबो RBI also promote financial literacy. Financial literacy. जिते भी प्रोविजन्स रूल्स रेगुलेशंस स्कीम्स प्रोजेक्ट सब लॉन्च होची जदी लोक मानक पाखरे ताकू यूज करबा को तांको निज प्रॉब्लम्स को एड्रेस करबा को से लिटरेसी नथिबो से अंडरस्टैंडिंग नथिबो कि ए सब जिंस को हमें एड्रेस केमती करिवो तो जदी से फाइनेंशियल लिटरेसी ही तांको पाखरे नथिबो ताहले ताहले कोन हबो से माने केबे ए सब स्कीम्स बा जहाँ भी सुविधा सुजोग जोगा होची ताको केबे भी अवेल करि परिबेनी तो केबे भी यूज करि परिबेनी तो से गैप ता जहाँ एग्जिस्ट करूची मेन विमेन रूरल अर्बन आंक भितरे तो सेटा केबे भी क्लोज हे परिबेनी. सो फाइनेंशियल लिटरेसी इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर पीपल एंड हु प्रोवाइड्स दैट it is provided by RBI. So it is under the developmental role of RBI to promote financial literacy and banking access. And banking access. Financial inclusion plan जो FIPs रही and financial literacy week द्वारा कौन होची it helps people to understand how to save से माने केमती निज पैसा को निज प्रॉफिट को केमती बैंक रे सेव करि परिवे बैंक रे सेव कर देले फर्दर सेटू बोरो केमती बैंक रु केमती लोन बोरो करि परिवे आ बोरो करि सरला परे ताकू को जगह रे वाइजली इन्वेस्ट करि परिवे तो से एगुडा सबु कहा द्वारा पॉसिबल हे पारुची फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान्स और एंड फाइनेंशियल लिटरेसी वीक which comes under the developmental role of RBI. Body the second part that talks about the credit policy. Credit policy केमती inclusive growth को inclusive growth promote करूची. How credit policy is promoting inclusive growth? First of all, credit policy मु कही the rules जोड़ा कि RBI set करे बैंक मान को पाई for how banks give loan and who gets priority. And here is how credit policy support the poor and whom the undeserved groups. First से कौन करिवो priority sector lending it comes under the credit policy. RBI priority sector lending under कौन वे RBI it forces banks for what? Banks to give loans to important sectors like PSL रे को माने आछंदी. For example, agriculture आसुची agriculture आसीगला farmers मानक पई. Then MSME आसुची. Education comes under priority sector. Education आसिला. Low income housing, weaker sections जेमती SC, ST, women etc. एटा इंश्योर करछि दिस इंश्योर दैट द क्रेडिट रिचेस जो क्रेडिट बा लोन रोजी सेगुडा क्रेडिट रिचेस दोस हु रियली नीड इट एमान को रियली नीड अछि क्रेडिट रो लोन रो तो ए जिंसटा PSL RBI जोटा PSL करे तो सेट इट इंश्योर्स दिस. देन सेकंड अछि गोटे जैम ट्रिनिटी. What is JAM Trinity? JAM Trinity. J stands for what? J is Jandhan, A for Aadhar and M for what? M for mobile. Banking sector रे जहाँ रिफॉर्म आसीची एई करंट किछि years रे the reforms in the banking
banking reforms जहाँ आसिला, the reforms in banking made it possible to link Jan Dhan accounts, Aadhaar numbers and mobile phone. एथिरे enable कौन होची jam trinity रो ताले कामो कौन एटा को link करी देला परे ए link कर देले हबो कौन it enables the DBT. They collectively enables the DBT. Now what is DBT? DBT is direct benefit transfer. Direct benefit transfer कोथ में यूज हुए to enable better access to financial services. Financial services रो better access मिली परिवो. थर्ड केमिति प्रमोट करि परिबा क्रेडिट पॉलिसी इंक्लूसिव ग्रोथ को एसएचजी लिंकेजेस करके. What are SHG linkages? What is SHG? What is the full form of SHG? Self help groups. Collectively नाबार्ड जो बॉडी अछि गोटे रेगुलेटरी बॉडी नाबार्ड प्लस आरबीआई एमाने कलेक्टिवली कोन सपोर्ट करबे इट दे विल सपोर्ट वुमेन लेड एसएचजीस नॉट ओनली एसएचजीस वुमेन लेड एसएचजीस बाय गिविंग देम व्हाट बाय गिविंग देम लोन्स मिलिबो एसएचजी मानको तो लोन्स जते बळे तांको मिलिबो एसएचजी जते बळे तांकर क्रेडिट एक्सेस जते बळे तांकर इंक्रीज हे जिवो सेतरे इंक्रीज कोन हबो तांकर growth. It will increase the growth in what? In rural areas, especially for women and the poor. Financial inclusion index. Financial inclusion index. जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रही ए इंडेक्स टा किए बाहर करे किए शो करे आरबीआई शो करे आरबीआई इंडेक्स से कौन शो करची कि 2017 रु नहीं कि 2023 जाके प्रोग्रेस है जी 53.9 थिला 2017 रे इठु बॉडी की 60.1 है जी आर माने कौन है इट मीन्स मोर पीपल आर नाउ पार्ट ऑफ द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम अधिका रु अधिका बैंकिंग रिफॉर्म्स हला एते सारा पॉलिसी स्कीम सब इम्प्लीमेंट होची अंडर दिस मोर पीपल आर अवेलिंग द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम सेव करूचंदी बोरो करूचंदी इन्वेस्ट करूचंदी ओके रिसेंट कौन कौन सब स्कीम्स आसी टिके ब्रीफ रे देखिबा रिसेंट स्कीम्स फॉर इंक्लूसिव क्रेडिट ग्रोथ फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस अब गाइडलाइंस केबे पब्लिश हेतला 2022 रे पब्लिश हेतला आरबीआई करतला गाइडलाइंस के प्रोवाइड करतला आरबीआई मेड रूल्स टू स्टॉप गाइडलाइंस आसीतला टू स्टॉप द फ्रॉड को रोकिबा पई जहां भी फ्रॉड बा एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिस चलीची इन मोबाइल बेस्ड लेंडिंग तो ताकू रोकिबा पई आरबीआई ए गाइडलाइंस को पब्लिश करतला टू इट गाइडलाइंस पब्लिश होला परे कोन हेची इट प्रोटेक्ट्स नाउ स्मॉल बोरोवर्स सेकंड क्रेडिट गारंटी स्कीम क्रेडिट गारंटी स्कीम्स फॉर एग्जांपल CGTMSE गोटे क्रेडिट गारंटी स्कीम जानते एटा कोथि पई आसी एमएसएमई को पई एमएसएमई तो एथिरे क्रेडिट गारंटी स्कीम रे कोन होची गारंटी प्रोवाइड करची हु इज द प्रोवाइडर ऑफ द गारंटी गवर्नमेंट इज द गारंटी प्रोवाइडर गारंटी कहा पई गवर्नमेंट गारंटीज पार्ट ऑफ द लोन कि जहां भी बैंक माने जो लोन दोचंदी तार किछिटा पार्ट किछिटा परसेंटेज सो इवन दोज विदाउट कोलैटरल कैन गेट द लोन्स ठीक अच्छे जो मान पाखे कोलैटरल नहीं तो बैंक्स माने जो लोन दौरान तार किछिटा पार्ट एमती भी प्रोवाइड करा जाओ जो मान पाखे कोलैटरल नहीं थर्ड केसीसी स्टैंड फॉर किसान क्रेडिट कार्ड्स रे कौन होची फार्मर्स कैन गेट इजी एंड क्विक लोन्स फार्मर मानू इजी आउ जल्दी
क्विक लोन्स मिलुची लो इंटरेस्ट रे एंड स्पेशली कहा को मिलुची स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स मान को मिलुची लास्टली मुद्रा योजना अंडर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जोटा कहा जाउची सिंस 2015 रु एटा 2015 रे लॉन्च हितला सिंस 2015 22 लाख करोड़ रो ऑलरेडी लोन डिसबर्स हेई सारिलानी 68% लोन बोरोवर्स होचंदी को माने वुमेन माने तो एटा कोन शो करछि इट शोज द सपोर्ट फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स वे फॉरवर्ड कोन हबो आहुरी कोन कोन स्टेप नबा दरकार टू स्ट्रेंथन द इंक्लूसिव ग्रोथ to promote this what more can be done first of all strengthen rural banking and internet access रूरल बैंकिंग एंड इंटरनेट एक्सेस बहुत रूरल एरियाज रे एमिति कोन अछि कि दे लैक स्टिल माने बैंक ब्रांचेस सेठी एपर्यंत भी माने प्रॉपर बैंक ब्रांचेस नाही और डिजिटल कनेक्टिविटी तो नाही तो रूरल बैंकिंग और इंटरेस्ट रूरल बैंकिंग को स्ट्रेंथन कर देले आ इंटरनेट एक्सेस को सेठी स्ट्रेंथन कर देले इंक्रीज करले इंक्लूसिव ग्रोथ प्रमोट हबो Second, make gender sensitive credit policies. Making gender sensitive credit policies. Special loan scheme आउ interest rate को मान को दिया जाबा दरकार वुमेन एंटरप्रेन्योर मान को तो एथिरे कोन बा जेंडर सेंसिटिव क्रेडिट प्रमोट हबा Third, combining green and inclusive finance. इंक्लूसिव फाइनेंस में जहाँ जहाँ स्टेप्स निया जाउची जदि ग्रीन फाइनेंस सहित ताकू इंक्लूड कर दिया जिबा कंबाइन कर दिया जिबो ताहले बोथ कोन हे जिबे इको फ्रेंडली हे जिबे आउ पीपल फ्रेंडली हे जिबे फोर्थ teaching financial literacy at school level. Financial literacy school level रे पढ़ा जिबा दरकार so that people will know how to handle money smartly. आउट एटा केतेबेले यूज हबो they will use banks जदि ताको निज मनी कोठी इन्वेस्ट करियार जो कोठी इन्वेस्ट करियार न अछि ए र जदि तांकर नॉलेज नथिबो ताले से माने बैंक को confidently से माने अप्रोच करि परिबे नै if people know how to handle money smartly then they will use the banks more confidently conclusion केमती एड्रेस करिवे conclusion रे एमती लिखि परिबे conclusion रे गोटे बिगर पिक्चर conclusion रे एमती गोटे बिगर पिक्चर दे परिबे कि मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट पॉलिसी एगुडा जस्ट मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट पॉलिसी एगुडा जस्ट इकोनॉमिक टूल्स नुहे दे आर नॉट जस्ट इकोनॉमिक टूल्स there is more to it they are also instrumental of social justice instrument of social justice हाँ आउ गोटे कथा मु इनिशियली कहिया को भूली जाइछि जेतबे आंसर लेखुतिबे अंडरलाइनिंग द कीवर्ड्स हे गला कीवर्ड्स और डाटास और फैक्ट्स रिपोर्ट्स माने जो जिंस गुडा कि आपण चाहउछन कि एग्जामिनर नोटिस करू फॉर ब्राउनी पॉइंट्स फॉर फेचिंग गुड मार्क्स से गुडा को अंडरलाइन करूथिबे अंडरलाइनिंग इज वेरी इंपोर्टेंट हाँ एबे कोन कहितली इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल जस्टिस जेमति कि एटा को अंडरलाइन करि परिबे इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल जस्टिस तो सेटा कोन करबे एटा इट विल ग्रैब द अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर द कॉपी इवैल्यूएटर
सोशल जस्टिस हे गला इफ इंडिया कीप्स वर्किंग ऑन if India keeps working on जदि price stability ऊपर work करिवो it means controlling the inflation, easy credit access, thirdly financial education. तो एथरे कोन हे परिबो then growth will not be limited to few people and it will reach to every section of the society. एमती हेले कोन हबो truly then it will make a truly inclusive economy. Clear? Third question. Read the third question. Question read करो. Third question. Geography environment question अच्छी. Okay. Question कौन कही? Describe the importance of biodiversity hotspots in the context of global ecological balance and conservation efforts. Biodiversity hotspots जो रही तार importance को describe करिया कही in context of what? In context of global ecological balance and conservation efforts. First हमें introduction देखिए. Introduction रे कौन address करिए? First एटी बुझिवा first कि biodiversity hotspot कहा हुआ जाए. What are biodiversity hotspots? Biodiversity hotspot होची एटा गोटे special area रे जाए. It is a special area जोठी की it has many unique species called endemic species. जोड़ा कि आउ कोठी देखा जाऊ नहीं ओनली से बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट रे ही देखा जाऊ छी यूनिक स्पीसीज जहा को एंडेमिक आउ कोठी देखा जाऊ नहीं माने सेटा सेटिकार एंडेमिक स्पीसीज हे गला आउ ए माने कहा अंडर अछनी दे आर अंडर हाई थ्रेट mainly due to what? Mainly due to habitat destruction. Habitat destruction रो गोटे example deforestation बुझी पारथिबे एई गोटे रिपोर्ट अछि as per Conservation International. As per Conservation International, world रे केतेटा biodiversity hotspot अछि 36 टा biodiversity hotspot अछि in the world. There are 36 hotspots in the world. आउ इंडिया रे केतेटा अछि इंडिया रे 4टा अछि कोडी कोडी वेस्टर्न घाट्स हिमालयस इंडो बर्मा रीजन जहा हला इंडो बर्मा रे देन सुंडालैंड जोड़ा निकोबार आइलैंड भी कहउछंती इंडिया रे ए चारटा होची बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट तो ए हॉटस्पॉट गुडा दे कवर लेस देन 2.5% of earth's land. But why they are important? Here it is. कहीं ना से माने ओवर एते कम लैंड एरिया ऑक्युपाई कले मध्य से माने दे सपोर्ट over 50% of world's endemic plants जोटा कि they are very important for global ecological balance. Why are biodiversity hotspots so important? First से माने important कौन पाई ecological significance देखिबा first their ecological significance of biodiversity hotspots. Biodiversity hotspot होची एमिति areas they are not just rich in plants and animals, they also provide critical services to whole planets.
they also provide critical services to the whole planet jemti ki climate and water cycle regulation climate and water cycle regulation provide କରୁଛନ୍ତି जो हॉटस्पॉट एरिया रे जो फॉरेस्ट अछि फॉरेस्ट एंड हॉटस्पॉट से माने कोन करछनी से माने एटमॉस्फियर रे जो कार्बन डाइऑक्साइड अछि दे एक्ट एज कार्बन सिंक्स से माने कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर नउछनी देयरफॉर दे एक्ट एज व्हाट दे एक्ट एज कार्बन सिंक्स एटमॉस्फियर रो कार्बन डाइऑक्साइड रो कंसंट्रेशन को लोअर करछनी सेकेंडली दे आर होम टू rare and endemic species. They are home to rare and endemic species. बहुत एनिमल और प्लांट एठी एग्जिस्ट करंती जोडा कि अन्य जगह रे एग्जिस्ट करंती देयरफॉर दे आर एंडेमिक टू दिस रीजन इफ दिस एरियाज आर डिस्ट्रॉयड जदी ए भले बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट सॉरी जदी डिस्ट्रॉय हे जिवो से स्पीसीज गुडा भी destroy HV. Those species will be lost forever. So they are home to rare and endemic species. Third, genetic diversity. हॉटस्पॉट्स रे डाइवर्स वेराइटी ऑफ जीन्स रही छी तो एटा कोथरे हेल्प करूची जदी जेतेबेले जेनेटिक डाइवर्सिटी रहउची सेटा हेल्प करूची क्रॉप इंप्रूवमेंट रे इट हेल्प्स इन crop improvement medicine fighting climate change and diseases lastly केमिति ecological significance is lastly pollination and soil fertility जदि बीज रहिले बर्ड्स रहिले इंसेक्ट रहिले सब एरिया रे से माने कोन प्रमोट करछनी से माने पॉलिनेशन प्रमोट करछनी आ जब भी डिकम्पोजर्स रहिले दे रिसाइकल डिकम्पोजर्स जदि डिकम्पोजर्स रहिले दे रिसाइकल द न्यूट्रिएंट्स एंड कीप्स द सॉइल फर्टाइल एंड हेल्दी फॉर एग्रीकल्चर सेकेंडली देखिबा कि हाउ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स दे हेल्प इन ग्लोबल कंजर्वेशन ग्लोबल कंजर्वेशन केमती करूची जेते भी इंटरनेशनल एफर्ट्स चली जी कोथि पई कि टू प्रोटेक्ट द नेचर इंटरनल एफर्ट्स रो मेन फोकस एरिया एबे कोन बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स first thing it attract what biodiversity hotspots they attract global funding को attract करूची under programs like what जेमति कि प्रोग्राम रही हे गला CBD कोन convention on biological diversity CBD by United Nations decade of ecosystem restoration जोटा अछि 2021 रो 2030 जाके biodiversity hotspot तारो गोटे key focus area these hotspots get fund and support from global institutions then used in climate mitigation projects एमान को climate mitigation project रे मध्ये यूज करा जाय climate mitigation projects बहुत hotspots से माने कोन eligible they are eligible for red plus projects जोटा forest पाई की सेति पाई के समान एलिजिबल तो सेही प्रोजेक्ट गुडा कर एम कोन दे प्रोजेक्ट्स एम टू reduce the deforestation and promote afforestation how support carbon storage they act like carbon sink my previous slide रे कहली
Next point, indicator of earth's health. अर्थ हेल्थ जदि से बड़ा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मानकर जदि से माने लोप पाइबे जदि से मानकर डिस्ट्रक्शन हबो डिफॉरेस्टेशन हबो हैबिटेट लॉस हबो जदि तांकर कंडीशन जदि वर्स होउची ताहाले एटा कोन सिग्नल करूची इट इज सिग्नलिंग दैट द planet's ecosystem is also in danger so they act as what? They act as ecological warning. Biodiversity hotspots jo rohuchandi they also act as ecological warning. Lastly, community based conservation. कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन बहुत लोकल और ट्राइबल कम्युनिटीज जोड़ा जो माने कि ये हॉटस्पॉट आखापाखी से माने रहउचंती तो तांको कंजर्वेशन ए माने करूचंती कंजर्वेशन इज डन विथ देयर हेल्प बाय इन्वॉल्विंग देम इन ecotourism forest production forest protection etc. ठीक अछि नेक्स्ट हमें देखिबा इंडियाज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आउ एमाने कोन पई नेशनली मैटर करंदी इंडियाज पर्सपेक्टिव रे देखिबा फर्स्ट मु कहली इंडिया रे अछि वेस्टर्न घाट्स इंडिया रे चारटा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रहिछि फर्स्ट होछि वेस्टर्न घाट्स रे कोन अछि ऑलमोस्ट 7400 स्पीसीज अछि आउ एटा गोटे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रे मध्य जाय. It plays a major role in what? Major role in regulating monsoon and water flow. Then Eastern Himalayas केमती मैटर करूची ईस्टर्न हिमालयस रो मेजर रिवर्स आसुची जेमती की मेजर रिवर्स फॉर एग्जांपल व्हाट फॉर एग्जांपल ब्रह्मपुत्र गंगा देन ए मध्य बहुत गुडे स्पीसीज एटी एग्जिस्ट करूछन जेमती की स्नो लेपर्ड हेगला स्नो लेपर्ड रेड पांडा एटसेट्रा इंडो बर्मा रीजन ये आउ गोटे इंडिया रो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडो बर्मा रीजन इंडो बर्मा रीजन टा स्पेसिफिकली इट इज रिच कोथरे रिच इन फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी रिवर्स हेगला फिश हेला तो एटा को मेजर थ्रेट मिले एटा को मेजर थ्रेट मिलुची इंडो बर्मा रीजन को कोथरू डिफोरेस्टेशन और डेवलपमेंट रो लास्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया रोची सुंडालैंड it is rich in marine life coral reefs and island ecosystem कहना सुंडालैंड टा को निकोबार आइलैंड भी कहउचंती निकोबार आइलैंड आ एटा बहुत सेंसिटिव टू सी लेवल राइज आ जो गुडा एमती कोस्टल एरिया रो इकोसिस्टम मरीन लाइफ हेगला कोरल रीफ्स हेगला आइलैंड इकोसिस्टम हेगला दे आर वेरी सेंसिटिव टू व्हाट दे आर वेरी सेंसिटिव टू सी लेवल राइज टिके जदि से बढ़िबो ताहले कोरल रीफ्स डिस्ट्रॉय हबो क्लाइमेट चेंज रो भी डिस्ट्रॉय हबो तारो वे फॉरवर्ड कोन रहइबो फर्स्ट ऑफ ऑल वे अहेड कोन हबो कोन करा जिबा दरकार what should be done what should we do to protect these areas first create eco-sensitive zones and
buffer areas. एगुड़ा हूँ से जोन दीज आर द जोन जो जहाँ अराउंड रे हॉटस्पॉट अच्छी जोटी ह्यूमन एक्टिविटी लिमिटेड थाए एमतिया एरियाज क्रिएट हेले सेठी unnecessary development infrastructure एगुड़ा सब रोका जाई परिबा and these areas will be protected. Second, encourage community involvement. Encourage community involvement. कम्युनिटी जो पीपल रहिले आखपाख एरिया रे तांको इंक्लूड कले एटा प्रमोट करिवो इको टूरिज्म. इट विल प्रमोट इको टूरिज्म and sustainable livelihood so that we can protect the nature and help the local people माने भी ए step through रू earn करि परिबे आ ताका livelihood improve करि परिबे. Then promoting research and documentation. आमको पढ़िबा दरकार स्पीसीज माने केमती एक्ट करछंदी तांकर हेल्थ ट्रैक करिबा दरकार आ ऑल टुगेदर इकोसिस्टम हैबिटेट ए विषय रे स्टडी करिबा देन प्रमोट जदि करिबा ए सब एरिया रे रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन ताहले होलिस्टिकली बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को कंजर्व आमे करि परिबा आ ए सब एरिया को प्रोटेक्ट करि परिबा. सो स्टडीइंग researching and documentation is very important for these areas to make the ecosystem better, to understand the ecosystem better. Fourth, improve international cooperation. Improve international cooperation. जमती कि स्पेशली किसी रीजन जमती इंडो बर्मा हो गला जोठी डिफोरेस्टेशन चलची अननेसेसरी डेवलपमेंट चलची तो जदि आमे शेयर करिबा विथ नेबरिंग कंट्रीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन यदि इंप्रूव करिबा प्रमोट करिबा ताहले बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा जाई परिबो बेटर कंजर्वेशन पॉलिसीज वर्कआउट हे परिबो फॉर हॉटस्पॉट्स फॉरेस्ट्स इन जनरल. कंक्लूड केमती करिबा. What should be the conclusion? कि biodiversity hotspots are like what? They are like nature's treasure chest. Biodiversity hotspot को कौन कहा जाए? Nature रा treasure chest हिसाब से देखा जाए कौन पाई बिकॉज दे आर फुल ऑफ रेयर स्पीसीज लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स एटसेट्रा हमें स्लाइड्स रे देखिले आ तो प्रोटेक्ट करा जिबा कोन दरकार प्रोटेक्टिंग देम सेटा गोटे ग्लोबल ड्यूटी केवल एनिमल ऑफ फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करबा पई तो नुह आ इंपोर्टेंट कोन पई क्लाइमेट कंट्रोल पई की फूड सिक्योरिटी पई की आ इन जनरल ह्यूमन रो वेल बीइंग पई इट इज इंपोर्टेंट टू प्रोटेक्ट देम. Human well-being ପାଇଁ. So by focusing on these hotspots एमतिया हॉटस्पॉट ऊपर फोकस कले आमे ग्लोबल एनवायरनमेंट टारगेट को अचीव करि परिबा एंड गोटे ग्रीनर हेल्दियर प्लैनेट को सिक्योर करि परिबा को मानक पई फ्यूचर जनरेशन पई. नेक्स्ट क्वेश्चन कहि कि क्लाइमेट चेंज टा it impact biodiversity in India and how biodiversity को climate change केमिति impact करूची आउ evaluate करा with respect to species migration, habitat loss and changing phenology. Introduction रे context टिके set करिवा. First introduction, setting the context. India is a very biodiverse country. Previous slide रे मु already describe करची. India कौन? India is a biodiverse country. Almost 8% वर्ल्ड रो जो recorded species रही छी सेटा इंडिया रे अछि. एते rich biodiversity इंडिया रे एबे गोटे threat. एमानकु threat रही छी. Due to what? Due to climate change. 2023 रे गोटे रिपोर्ट आसीतिला. रिपोर्ट रिलीज करितिला IPCC. आईपीसीसी रे एटा 6th असेसमेंट रिपोर्ट थिला. ए रिपोर्ट रे देखा जाइतिला कि जो ग्लोबल टेम्परेचर रही छी सेटा ऑलरेडी
ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड सेटा इंक्रीज करि सारलानी आउ ए टेम्परेचर इंक्रीज हेला फलरु दिस हैज कॉज्ड मेजर शिफ्ट इन इकोसिस्टम एंड स्पीसीज बिहेवियर एंड स्पीसीज बिहेवियर इंडिया रो वेस्टर्न घाट इंडिया रो जो वेस्टर्न घाट्स रही आउ हिमालयाज रही ए दीटा एरिया पर्टिकुलरली दे आर वेरी वल्नरेबल तो 2020 रे MOFCC रो रिपोर्ट कहितला कि अप टू 50% स्पीसीज ए जो सेंसिटिव एरिया रे रही से माने लोकली से माने एक्सटिंक्ट ही हे जिवे से और रहिबेनी से एक्सटिंक्ट ही हे जिवे तांकर एक्सटिंक्शन हबो इफ जदी ग्लोबल वार्मिंग टा बियॉन्ड 2 डिग्री सेंटीग्रेड को पळे ग्लोबल टेम्परेचर बा ग्लोबल वार्मिंग जदी 2 डिग्री सेंटीग्रेड रो इंक्रीज कर जाए त बियॉन्ड पळे ताले ए भलिया जो स्पीसीज अछन से माने एक्सटिंक्ट हे जिवे बॉडी रे हमें फर्स्ट एड्रेस करिबा हाउ एक्जेक्टली इज बायोडायवर्सिटी गेटिंग अफेक्टेड बायोडायवर्सिटी टा से केमिति अफेक्ट होची हाउ एक्जेक्टली इट इज गेटिंग अफेक्टेड फर्स्ट स्पीसीज माइग्रेशन एंड स्पीसीज माइग्रेशन कोन एनिमल्स माने मूव करूचंदी टू सर्वाइव जेते बळे टेम्परेचर बढ़ुची with the rise in temperature बहुत स्पीसीज कौन करछंदी से माने कूलर प्लेस को फॉर माइग्रेशन से माने माइग्रेट करि जाउछंदी टू सर्वाइव सॉरी आ ये माइग्रेशन रे अछि अल्टीट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल शिफ्ट्स यार माने कोन माउंटेन्स जंदी हिमालयास हे गला वेस्टर्न घाट्स हे गला एनिमल्स माने कोन करछनी एनिमल माने क्लाइंब करि जाउछंदी टू हायर ऑल्टीट्यूड फॉर कूलर क्लाइमेट फॉर एग्जांपल जेमते स्नो लेपर्ड्स हे गले स्नो लेपर्ड्स दे आर फोर्स्ड टू स्मॉलर अल्पाइन जोन्स से माने कोडी पळौछंदी अल्पाइन रीजन्स को पळौछंदी जेतेबेले ए माने माइग्रेट करके ए रीजन को पळेले एठी भी आउरी प्रेडेटर्स अछंदी एथरे कोन होची एथरे स्ट्रेस इंक्रीज होची एंड कंपटीशन इंक्रीज होची अमंग प्रेडेटर्स सेकंड मरीन स्पीसीज माइग्रेशन सिमिलरली कोरल रीफ स्पीसीज कोन करछंदी इन प्लेसेस लाइक अंडमान सी दे आर मूविंग कोरल स्पीसीज से माने कोडी मूव करछंदी से माने डीपर एंड टुवर्ड्स पोल से माने मूव करूछंदी बिकॉज ऑफ वार्मर वाटर जेतेबेले वार्म हे जाउची तो आ फल रे कोन होची इट लीड्स टू लेस बायोडायवर्सिटी नियर द इंडियन कोस्टलाइन थर्ड इन्वेसिव स्पीसीज स्प्रेड फॉर एग्जांपल किछटा इन्वेसिव स्पीसीज रो ना जानिथिबि पार्थेनियम एला पार्थेनियम लंटाना एमानकर स्प्रेड आउ प्रोलिफरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल कोन होची इकोसिस्टम डिस्टर्ब होची इन्वेसिव स्पीसीज जेमति लंटाना से माने बहुत इजीली एमाने कोन करंदी ए माने बहुत इजीली बढ़ी पारंती रादर देन दोस नेटिव ट्रीज एंड श्रब्स तो एथरे कोन होची जो नॉन नेटिव प्लांट्स रहिले से माने हार्म करूचंदी जेमति के माने नॉन नेटिव रहिले से माने डायरेक्टली काहा को हार्म करिवे लोकल स्पीसीज को लोकल प्लांट्स लोकल स्पीसीज को से माने हार्म करूचंदी बायोडायवर्सिटी रिड्यूस करूचंदी आउ फॉरेस्ट स्ट्रक्चर को चेंज कर दोचंदी सेकंड पार्ट कोन एड्रेस करबा हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन habitat loss and fragmentation
जो स्पीसीज गुड़ा तांकर होम को लूज कर क्लाइमेट चेंज रे कौन हो जो हैबिटेट्स जो फॉरेस्ट रहा से गुड़ा डिस्ट्रॉय हो ब्रेक डाउन हो तो स्पीसीज मानक पई एटा हार्ड ही होची सर्वाइव करिया पे इट इज हार्डर फॉर द स्पीसीज टू सर्वाइव जो हैबिटेट लॉस रे इंक्लूड होची कोन फॉरेस्ट डिग्रेडेशन फॉरेस्ट डिग्रेड केमती होची नेचुरल कॉजेस जेमती कि फॉरेस्ट फायर्स हे गला फॉरेस्ट फायर्स ड्रॉट्स पेस्ट अटैक्स by damaging forest by deforestation तो एथिरे फॉरेस्ट डिग्रेड होची आउ केमिति हैबिटेट लॉस होची वेटलैंड डिसअपियरेंस रु वेटलैंड डिसअपियरेंस रु जेतेबेले चेंज रहउची रेनफॉल आउ टेम्परेचर सॉरी तो वेटलैंड्स ड्राई होची रेनफॉल आउ टेम्परेचर चेंजेस रे वेटलैंड ड्राई होची जेमती कि चिलिका लेक कियोलाडो एगुडा सब होची वेटलैंड रो एग्जांपल थर्ड कोरल ब्लीचिंग जेतेबेले सी रो टेम्परेचर राइज होची सी टेम्परेचर राइज हेले कोन हुए इट लीड्स टू कोरल ब्लीचिंग कौन कोरल्स माने कौन लूज करंती तांकर कलर सो एठु ही व्हाट आसी ब्लीचिंग दैट द कोरल्स आर बीइंग ब्लीच्ड दे आर लूजिंग देयर कलर से माने तोले तांका कलर लूज कर दियंती दे आल्सो लूज द लाइफ सपोर्टिंग एल्गी ठीक अछि आ कोरल reefs they are specifically very important, they are essential for marine biodiversity. Loss of mangroves, sea level rise hele au cyclones asile they are very damaging for mangroves ra example diyo mangroves ra example jemti ki sundarbans so they are also susceptible to what they are also susceptible to very vulnerable to sea level rise and cyclone तो से मैंग्रोव रे जहा जो माने भी स्पीसीज रहिले कोन कोन स्पीसीज अछन मैंग्रोव रे रॉयल बेंगल टाइगर आउ जते भी मरीन स्पीसीज अछन से माने रिस्क रे अछन दे पुट द रॉयल बेंगल टाइगर एंड द मरीन स्पीसीज एट रिस्क 3 changing phenology चेंजिंग फिनोलॉजी ठीक अच्छे फास्ट आम देखा फिनोलॉजी माने कौन फिनोलॉजी कौन जो नेचुरल इवेंट लाइक जमती फ्लावरिंग है गोटे प्लांट रो नेचुरल इवेंट सेगुड़ा कौन को टाइम रे तार फ्लावर आसीबो को टाइम रे फ्रूट आसीबो बा बर्ड्स मानकर माइग्रेशन को टाइम रे बर्ड्स माने माइग्रेट करिवे ए जो नेचुरल टाइमिंग को कौन कहा जाए फिनोलॉजी कहा जाए तो क्लाइमेट चेंज रे कौन होजी दे आर मेसिंग अप विथ द कैलेंडर ऑफ दीज इवेंट्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज तो एटा अफेक्ट कौन करूची इट अल्टर्स द फ्लावरिंग एंड द फ्रूटिंग लाइक फॉर एग्जांपल जेमि मैंगो रे देखिबा मैंगो रे कौन फ्रूट ट्रीज लाइक मैंगो जैकफ्रूट माने केरला महाराष्ट्र जो अछि से माने फ्लावरिंग इधर जल्दी है जाउची नहले लेटर होची सो एटा अफेक्ट फर्दर कौन करूची इट इज अफेक्टिंग द पॉलिनेटर्स लाइक बीज आउ जो एनिमल माने ए फ्लावर आउ फ्रूट ऊपर डिपेंड करूचंदी तांकु मध्य अफेक्ट करूचे तापरे बर्ड माइग्रेशन को भी अफेक्ट करूची बर्ड माइग्रेशन टाइम को बर्ड जेमती कि साइबेरियन क्रेन हे गले फॉर एग्जांपल
साइबेरियन क्रेन आ बार हेडेड गीज एमती किसी एग्जांपल अच्छी से मैंने केतबळे जल्दी पळे आछंती केतबळे परे आछंती दे आर अराइविंग अर्ली और लेट so this affects the it also affect the wetland balance and food chains आउ गोटे कोन करूची चेंज होची mismatch in plant pollinator timing जेतबळे प्लांट्स फ्लावर्स जेतबळे ब्लूम करे आउ पॉलिनेटर्स बट किंतु पॉलिनेटर्स जदि अवेलेबल नथिबे सेही सेम टाइम रे तो रिजल्ट कोन हबो प्लांट रो ब्लूमिंग पीरियड जदि अफेक्ट हे जिवो आ पॉलिनेटर सेही टाइम रे जेतबळे से ब्लूम करूची ड्यू टू क्लाइमेट चेंज अवेलेबल नथिबे तो सेतरे कोन हबो लेस पॉलिनेशन हबो लेस पॉलिनेशन हेले कोन हबो less seed dispersal and seed formation less seed formation and आज जेतबळे सीड जेतबळे फॉर्मेशन लेस हबो तो तांकर डिस्पर्सल भी हेई परिबोनी ताले एटा कोन हबो इट विल डिक्रीज द प्लांट स्पीसीज वे फॉरवर्ड कोन हबो वे फॉरवर्ड जेमती कि नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान रोची इंडिया रो नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान आको स्ट्रेंथन करबा दरकार फॉरवर्ड आको स्ट्रेंथन कले कोन हबा क्लाइमेट रेजिलियंस स्टेप्स मोर एफिशिएंटली निया जाय परबो climate resilient steps more efficiently निया गले कोन हबो it will promote in habitat protection and restoration एटा फर्स्ट हला सेकंड वे फॉरवर्ड कोन climate smart conservation eco corridor for example eco corridor एमती इको कॉरिडोर्स क्रिएट कले कोन हबो एनिमल्स माने सेफली माइग्रेट करि परिबे न्यू हैबिटेट को थर्ड कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग कले कोन हबो लोकल पीपल मानु को एथरे कोन करा जिवो ट्रेन करा जिवो कोथ पई कि टू ऑब्जर्व एंड रिपोर्ट द फिनोलॉजिकल चेंजेस लोकल पीपल माने जदि ट्रेन थिबे तांको पाखरे नॉलेज थिबो कि को टाइम रे फ्लावरिंग होची गोटे पर्टिकुलर स्पीसीज रे तांको लोकल स्पीसीज रे को टाइम रे फ्रूटिंग होची बा बर्ड्स माइग्रेशन जहां भी तो से माने ताको रिपोर्ट करि परिबे लाइक चेंजेस इन बर्ड अराइवल बर्ड्स माने आगुरु एति बेले आस्तले एबे एति बेले आछंदी कि ट्री रो फ्लावरिंग हला से माने ताको ऑब्जर्व करि परिबे आउ देन रिपोर्ट करि परिबे फोर्थ impact assessments in planning डेवलपमेंट प्रोजेक्ट गुड़ा स्टार्ट हुआ पूर्व तांकर जो बायोडायवर्सिटी और क्लाइमेट इंपैक्ट स्टडी एफिशिएंटली हुए ताहले कंजर्वेशन मेजर्स स्ट्रेंथन हबो भल से निया जाय परिबो कंक्लूजन देखिबा कंक्लूजन केमती एड्रेस करबे लाइक क्लाइमेट चेंज जो रहिला क्लाइमेट चेंज it is not just an environmental issue एटा एबे गोटे बायोडायवर्सिटी क्राइसिस हे गलानी कहीं ना एटा अफेक्ट करूची जेमति कि स्पीसीज माइग्रेशन हे गला ताको अफेक्ट करूची हैबिटेट्स अफेक्ट करूची नेचुरल टाइमिंग्स फिनोलॉजी आकु भी अफेक्ट करूची त इंडिया को कोन दरकार इंडिया वांट्स जदि इंडिया तार रिच बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करबा को चाहूची ताले इंडिया को कोन करबा दरकार साइंटिफिक प्लानिंग कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट
आउ क्लाइमेट बेस्ड कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करबा दरकार तो सेते बेले जाई कि ही एटा एन्श्योर करा जाई परिबो कि आवर इकोसिस्टम इट विल रिमेन स्टेबल एंड आमर फ्यूचर जनरेशन जो रहिले दे विल इनहेरिट अ हेल्दी न्यू नेचुरल वर्ल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही एटमॉस्फेरिक वाटर ज्योग्राफी रो क्वेश्चन आसीगला एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर एक्ट एज बोथ कूलेंट एंड वार्मर नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक दे देछि तारो इन द अर्थ सिस्टम डिस्कस द डुअल रोल एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर जो नेगेटिव आई मीन एज अ कूलेंट एंड एज अ वार्मर जो डुअल रोल रहिला नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक मेकानिज्म जो रहिला ता जो डुअल रोल ताको डिस्कस करबा कही विथ एग्जांपल्स. तो इंट्रोडक्शन रे कौन एड्रेस करिवे इंट्रोडक्शन रे first we will address why is water vapor, what is water vapor ta kono and why it is importance kono water vapor ro. first of all water vapor माने हला water vapor होची एटा गोटे ग्रीन हाउस गैस रे जाए. water vapor is the most abundant greenhouse gas. ए water vapor atmosphere रे बहुत अधिका रही आउ एटा गोटे ग्रीन हाउस गैस and its concentration is more than CO2 or methane. कार्बन डाइऑक्साइड आउ मिथेन रो concentration जहाँ atmosphere रे रही ता ठारू मध्य अधिका water vapor रो concentration रही. जदि क्वेश्चन आसीबो एटा पचारिबो कि को ग्रीन हाउस गैस टा atmosphere रे अधिका अछि तो कार्बन डाइऑक्साइड नुए कार्बन डाइऑक्साइड ठारू अधिका water vapor अछि atmosphere रे. आ वाटर वेपर टा कौन करुचे एटा गोटे डुअल रोल परफॉर्म करुचे. फर्स्ट एज अ वार्मर एटा वार्मर ए कौन करुचे इट वार्म्स द अर्थ बाय ट्रैपिंग ग्रीन हाउस बाय ट्रैपिंग हीट. जाको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहउछंती ग्रीन हाउस इफेक्ट कहउछंती. आउ एटा कूल भी करुचे अर्थ को इट आल्सो कूल्स अर्थ थ्रू व्हाट थ्रू evaporation cloud formation and heat transfer. गोटे रिपोर्ट अच्छी नासा एंड आईपीसीसी रो गोटे रिपोर्ट अच्छी कि वाटर वेपर को ए रिपोर्ट थ्रू एटा देखा जाइछि कि वाटर वेपर इज रिस्पांसिबल फॉर अराउंड 60% ऑफ अर्थ नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट. अर्थ रो नेचुरल जो ग्रीन हाउस इफेक्ट रहिला वाटर वेपर सेति पई 60% रिस्पांसिबल. आउ सेम टाइम रे वाटर वेपर टा एसेंशियल कोथि पई कि टेम्परेचर बैलेंस पई क्लाउड रेनफॉल टेम्परेचर बैलेंस क्लाउड rainfall and evaporation by. So water vapor is like double-edged sword. It also act as a warmer and it also act as a coolant in climate regulation. Let's understand water vapor's two opposite roles. First, gote ye kemiti gote it act as a warmer, that is positive feedback loop. वाटर वेपर कौन इंक्रीज करुची इट इंक्रीजेस द वार्मिंग. फर्स्ट ये केमिति वार्म करुची देखिबा फर्स्ट ए रे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट. प्रीवियस स्लाइड रे देखिले कि वाटर वेपर इज अ ग्रीन हाउस गैस सो इट विल प्रोवाइड ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट. वाटर वेपर कौन करे अर्थ जो लॉन्ग वेव रेडिएशन रिलीज करे वाटर वेपर जहाँ क्लाइमेट रे रहिला से ताको ट्रैप करे. ट्रैप कले कौन हम से हीट टा स्टे करिगला एटमॉस्फेयर रे सो इट विल इंक्रीज द सरफेस टेम्परेचर. सो इट विल ऐड टू द वार्मिंग ऑलरेडी कॉज्ड बाय CO2 मीथेन एगुडा ऑलरेडी जो वार्मिंग कॉज करछन तो
ए जिनसटा इट एड्स टू द वार्मिंग ऑलरेडी कॉज्ड बाय द CO2 एंड मीथेन. सेकेंड, पॉजिटिव क्लाइमेट फीडबैक. जमती CO2 वार्म करूची प्लैनेट को, मोर वाटर एवापोरेट होची, तो एथिरे कोन होची, इट क्रिएट्स मोर वाटर वेपर. अर्थ रो वार्मिंग संगे जेतबेले अधिक रु अधिक वाटर एवापोरेट होची, इट इज क्रिएटिंग मोर वाटर वेपर. सो वाटर वेपर क्रिएट अधिक हेले कोन होची, इट ट्रैप्स इवन मोर हीट. तो एटा आहुरी हीट ट्रैप करची अर्थ रो लॉन्ग वेव रेडिएशन रु. दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक. आ ए जो लूप टा क्रिएट होची आको कहवा जाउची कोन, पॉजिटिव फीडबैक. फॉर एग्जांपल ट्रॉपिकल ओशंस, एटी गोटे एग्जांपल कोट करि परिबे. ट्रॉपिकल ओशंस. सेकेंड देखिबा कि एटा एज अ कूलेंट केमिति बिहेव करची वाटर वेपर, how it is helping to reduce the heat. On the other hand, water vapor also helps to cool the planet by what? By evaporative cooling. Evaporative cooling कोन, जेतबेले वाटर एवापोरेट होची सेतबेले से लेटेंट हीट को नै जाउची. इट टेक्स अवे द लेटेंट हीट. तो जहा फल से सरफेस टा कोन होची, जेतबेले जोठु वाटर वेपर जाउची भारी, तो से सरफेस टा कूल रहउची, कूल हो जाउची कंपैरेटिवली. लाइक हाउ आवर स्किन फील्स आफ्टर स्वेटिंग हेला पर स्किन जेमती कूल डाउन हो जाए सेमती. नेक्स्ट केमिति कूलेंट हिसाब रे होची, क्लाउड फॉर्मेशन एंड अल्बेडो इफेक्ट. एटा समस्त जानथिबे कि वाटर वेपर it forms cloud. Water vapor they form what, they form clouds. The cloud कोन करूची, सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर दउची, सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर दबा टू स्पेस. आ जहा को कुहा जाय कोन, एटा को कुहा जाय अल्बेडो इफेक्ट. तो सनलाइट को जेतबेले रिफ्लेक्ट कर दउची, तो एटा अर्थ रो सरफेस टेम्परेचर को रिड्यूस कर दउची. फॉर एग्जांपल Indian monsoon clouds. Then convective heat transfer. Convective heat transfer. वाटर वेपर जेतबेले कैरी करूचंदी हीट अपवर्ड्स, वाटर वेपर हेल्प्स कैरी हीट अपवर्ड्स फ्रॉम अर्थ सरफेस टू अपर एटमॉस्फेयर. जेतबेले इवापोरेशन होची द वाटर वेपर हीट को कैरी करूचंदी टू अपर एटमॉस्फेयर. तो एटा कोन करूची, एटा स्प्रेड आउट करूची कहा को, हीट आउ प्रिवेंट्स लोकल ओवरहीटिंग, प्रिवेंट्स लोकल ओवरहीटिंग. वार्मिंग एंड कूलेंट तो पढ़िले केमती वार्म अप करछि, केमती कूल डाउन करछि. एबे तार बैलेंसिंग एक्ट देखिबा. बैलेंसिंग एक्ट, बट इट इज कॉम्प्लिकेटेड. एंड व्हाई इट इज कॉम्प्लिकेटेड? A type of clouds. Water vapor doesn't always act the same way. ठीक अछि, it माने तार जो इफेक्ट रोची सेटा डिपेंड करूची टाइप ऑफ क्लाउड्स उपरे. वेरियस फैक्टर्स देखिबा. फर्स्ट होची टाइप ऑफ क्लाउड्स, जेमति कि हाई क्लाउड्स रहिले से माने लाइक साइरस क्लाउड रहिले. हाई क्लाउड्स दे व्हाट, दे डू व्हाट, हाई क्लाउड्स दे ट्रैप हीट. साइरस, हाई क्लाउड्स ट्रैप हीट. और लो क्लाउड्स जो माने रहिले, लो क्लाउड्स दे रिफ्लेक्ट सनलाइट. तो एठी वार्म होची एनवायरनमेंट, एठी कूल होची. आउ कोन फैक्टर रहउची, रीजन एंड सीजन.
रीजन एंड सीजन केमती रहउची इट एक्ट एज अ फैक्टर ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन रे कोन होची वाटर वेपर जेमती कि ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन रे वाटर वेपर टा कोन रहउची एटा वार्मिंग इंक्रीज करूची जेतेबेले कि ड्राई रीजन रे कौन होई थाए एवापो ट्रांसमिशन ट्रांसपिरेशन एवापो ट्रांसपिरेशन रे कौन होची लैंड टा कूल डाउन होची सो द नेट इफेक्ट ऑफ वाटर वेपर डिपेंड्स ऑन लोकेशन सीजन क्लाउड टाइप कंक्लूड केमती करबा आंसर को कंक्लूजन केमती हबो वाटर वे एमती हमें देखै परिबा कि वाटर वेपर टा बोथ it acts as dual it plays a dual role and complex role in earth climate it amplifies warming and it also cools the earth through clouds evaporation heat transfer and because of this understanding water vapor is very crucial kothi pai ki predict for the prediction of climate change making accurate climate models and environmental policies plan करिया पाई ए सबरो अंडरस्टैंडिंग थिबा दरकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा सेम कहि जे एक्सेस करो रोल ऑफ व्हाट ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर इन द फॉर्मेशन एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रो फॉर्मेशन ऑफ इंटेंसिफिकेशन रे एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर रो कोन रोल रहउची ताको एक्सप्लेन करिया को कहि जे फर्स्ट हमें बुझीबा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहा हुआ जाए व्हाट आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एगुड़ा होची पावरफुल स्टॉर्म्स जोड़ा कि वार्म ओशन वाटर फॉर्मेशन आंकर कोठी हुए वार्म ओशन वाटर फॉर्मेशन हुए आ जिते बळे कि वार्म ओशन वाटर जेकोन से वाटर बॉडी ऊपर जो एयर पैकेट टा फॉर्म हैला आ वार्म ओशन वाटर रे फॉर्म हवा माने कोन तार गोटे प्री रिक्विजिट होची सेरी लो प्रेशर थिबा दरकार आ वाटर बॉडी ऊपर जे कोनसी एयर पैकेट फॉर्म हुए सेतिरे बहुत अबंडेंट मॉइस्चर थाए आ वार्म ओशन वाटर ऊपर फॉर्म हेची माने सेतिरे मॉइस्चर कंटेंट बहुत थिबो आ ई जो स्टॉर्म गुडा तांगर एनर्जी आनंती जो हीट आ मॉइस्चर जो से एयर पैकेट एक्वायर कला over the water body over the warm water body storm to energy ane it gets the energy from this abundant moisture and heat of the ocean IMD and IPCC ର 6th assessment report हिसाब रे कह जाइछि कि साइक्लोन माने they are becoming stronger and more frequent especially in Bay of Bengal and Arabian Sea तर main reason होछि कि more moisture in the atmosphere obviously and warmer ocean temperature due to what due to climate change formation केमिति होछि साइक्लोन रो हाउ डज एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर हेल्प इन साइक्लोन फॉर्मेशन एंड ग्रोथ डायरेक्टली बॉडी डैमेज को एड्रेस करियो फर्स्ट हमें देखिबा कि फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन हाउ मॉइस्चर हेल्प्स मॉइस्चर केमिति हेल्प करूची साइक्लोन रो फॉर्मेशन को फर्स्ट थिंग evaporation from warm oceans evaporation from warm oceans जेते बेले कि सी सरफेस टेम्परेचर 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड रु अबव पळाए तो वाटर से जो ओशियन रो जो वाटर रहिला सेडा एवापोरेट होबा स्टार्ट करिवे रैपिडली आ से जो मॉइस्चर एयर पैकेट जो एयर को राइज हे जाए इट इज की इंग्रेडिएंट इन फॉर्मिंग व्हाट इन साइक्लोन second latent heat release
जेतेबेले मॉइस्ट एरिया राइज करि जाउची आउ सेटा ओवर द अल्टीट्यूड ओवर टाइम से कोन करबो से कूल डाउन हबो कूल डाउन हैला परे कोन हबो से जो वाटर वेपर सेतेबेले कोन करबे सेतेबेले कंडेंस करबे कंडेंस आफ्टर कूलिंग डाउन टू फॉर्म व्हाट टू फॉर्म क्लाउड्स क्लाउड फॉर्मेशन परे कोन हबो रिलीज हबो latent heat release ହେଇସାରିଲା ପରେ this heat latent heat कौन this heat gives energy to the cyclone ଆଉ ଏଇ जो heat ही responsible to giving energy to cyclone strengthening करिवो storm को ଆଉ lower करिवो pressure cyclone जो आए थिवो जो से tropical region ऊपर form होउची ताहले से आए को आहुरी lower करि देबो center रे से pressure को lowering the pressure at the center low vertical winds low vertical wind shear and vortex formation जेतेबेले मॉइस्ट एनवायरनमेंट रे से जो राइजिंग एयर से स्टेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड वे इन अ मॉइस्ट एनवायरनमेंट द राइजिंग एयर टा स्टेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड वे तो एटा सपोर्ट करे द फॉर्मेशन ऑफ द वोर्टेक्स जो स्पिनिंग सेंटर साइक्लोन रो एटा सपोर्ट करे ताको आमे शॉर्ट रे ए पूरा प्रोसेस को देखिबा जदी फर्स्ट ऑफ ऑल अधिका मॉइस्चर रोची एयर पैकेट रे मोर मॉइस्चर मोर राइजिंग एयर मोर एनर्जी कोड आसीबो लेटेंट हीट रू साइक्लोन फॉर्मेशन साइक्लोन इजीली फॉर्म हे जिवो आउ स्ट्रांग हे जिवो सेकंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ साइक्लोन मॉइस्चर फॉर्मेशन रे केमिति हेल्प करछि देखले एबे हमें देखिबा कि मॉइस्चर टा साइक्लोन रो इंटेंसिफिकेशन रे ताको केमिति हेल्प करूछि इंटेंसिफिकेशन केमिति इंटेंसिफाई करूछि मॉइस्चर साइक्लोन को फर्स्ट मॉइस्चर इंक्रीजेस कन्वेक्शन आउ से एयर पैकेट जो मॉइस्चर से अबंडेंट मॉइस्चर अछि माने कोन हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन रही माने बहुत मॉइस्चर अछि एयर पैकेट रे जोटा कोन करछि लार्जर आउ टॉलर थंडर क्लाउड्स से फॉर्म करछि आउ सेही क्लाउड्स कोन करबे स्ट्रांग विंड्स आनिबे आउ विंड्स स्ट्रांग हबो आउ रेनफॉल हेवी हबो then rapid intensification केमिति होछि जेतबे बहुत मॉइस्चर अछि इंटेंसिफिकेशन हबा पय मॉइस्चर कंटेंट अधिका थिबा दरकार आ जेतबे बहुत बेसी मॉइस्चर अछि साइक्लोन रो सेंट्रल प्रेशर कोन होछि ड्रॉप करि जाउछि साइक्लोन रो सेंट्रल प्रेशर इट ड्रॉप्स वेरी फास्ट तो एटा को कहा जाय आ एई प्रोसेस टा को कहा जाउछि एक्सप्लोसिव डीपनिंग एक्सप्लोसिव डिपेनिंग एटा जतबेले होजी साइक्लोन बहुत इंटेंस होची गोटे शॉर्ट टाइम रे साइक्लोन बहुत इंटेंस हे जिवो फॉर एग्जांपल एई सिचुएशन रो जदी एग्जांपल देखिबा साइक्लोन तोक्टाई 2021 रे जोटा हितला इन अरेबियन सी सेटा इंटेंसिफाई करि गला क्विकली ड्यू टू हाई मॉइस्चर सी wider storm area जेतबेले wider storm area रोची सेतबेले साइक्लोन बेसी इंटेंसिफाई होची मोर मॉइस्चर मींस मोर क्लाउड्स एंड रेन बैंड्स एतिके एक्सप्लेनेशन रे एटा त हमें जानि गले तो साइक्लोन कोन करची कवर करि परची गोटे लार्ज एरिया को सो दिस लीड्स टू वाइडर डैमेज जेतबेले गोटे लार्ज एरिया को से कवर करिवो तो डैमेज टा भी से हिसाब रे बढ़िवो
It intensifies the damage from wind and rainfall. Case studies and trends जदि देखिबा किछि एग्जांपल्स ऑफ केस स्टडीज फॉर एग्जांपल जेमति कि साइक्लोन आम्फान हे गला 2020 रो सी टेम्परेचर एते रेकॉर्ड बेसिस रे हाईली राइज करि गला जे एयर वाज फुल ऑफ मॉइस्चर तो एटा गोटे सुपर साइक्लोन हे गला विद इन 24 आवर अरेबियन सी साइक्लोन को देखिया गले अरेबियन सी साइक्लोन दे आर रेयर अरेबियन सी रे साइक्लोन गुडा रेयर थाए किंतु एबे कॉमन होची स्ट्रॉन्गर होची फॉर एग्जांपल अरेबियन सी साइक्लोन रो गोटे एग्जांपल देखिबा साइक्लोन बिपर्जय आईपीसीसी रिपोर्ट्स कहिची अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी रिपोर्ट्स कौन अच्छी आईपीसीसी रिपोर्ट्स रे मेंशन ओशन रो वार्मिंग रे ड्यू टू वार्मिंग ऑफ ओशन साइक्लोनिक रेनफॉल जो रहुची साइक्लोन जेतेबेले हुए जो रेनफॉल टा से टाइम रे हुए इट इज इंक्रीजिंग बाय 10 to 15% आगुरु जति की होतला सेथिरु भी 10 to 15% इंक्रीज देखा जाईची आवर मेन रीजन होची मॉइस्चर मोर मॉइस्चर इन एयर वे फॉरवर्ड कोन हबो साइक्लोन गोटे नेचुरल डिजास्टर तारा वे फॉरवर्ड कोन हबा दरकार व्हाट शुड बी डन बेटर मॉनिटरिंग हबा दरकार साइक्लोन रो सो दैट बेटर मॉनिटरिंग का द्वारा जते सैटेलाइट्स रहिला से माने कोन ट्रैक करबे ह्यूमिडिटी ट्रैक करबे सी सरफेस टेम्परेचर ट्रैक करबे रियल टाइम रे आउ कोन हबा दरकार स्ट्रॉन्गर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स अर्ली वार्निंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कले कौन हम साइक्लोन रो फोरकास्टिंग इंप्रूव हम रैपिड इंटेंसिफिकेशन हे गला सुपर साइक्लोन हम कि नहीं आर अलर्ट्स लोक मानू को मिलिबो देन बिल्ड क्लाइमेट रेजिलिएंट सिस्टम्स बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट सिस्टम्स एथिरे कोन हम एमती इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करा जिबा दरकार कोस्टल इकोसिस्टम जेमनी मैंग्रोव्स रहिला साको सपोर्ट करा जिबा दरकार सो दैट इट कैन रिड्यूस द साइक्लोन इंपैक्ट कंक्लूजन केमती एड्रेस करबे गोटे फाइनल अंडरस्टैंडिंग पाई एमती लिख परिबे कि मॉइस्चर इज लाइक द फ्यूएल ऑफ अ साइक्लोन विदाउट इट स्टॉर्म कैन नॉट ग्रो मॉइस्चर टा कोन मॉइस्चर इज लाइक द फ्यूएल फॉर साइक्लोन and without the moisture the cyclone cannot grow and due to climate change pai kon hoji both ocean and air ocean ଆଉ air दीटा जाको वार्म होजी जोटा माने मोर मॉइस्चर एंड मोर मॉइस्चर थिबारु कोन होजी साइक्लोन स्ट्रांग होजी आउ बेसी डैमेजिंग होजी आउ इंडिया को जदी if India wants to stay safe from these growing threats it must understand कि moisture केमिति affect करूची cyclone को आउ disaster management निजर disaster management को improve करबा दरकार and it can also build stronger climate resilient infrastructure कौन कही द emergence of Magadha as an imperial power was the result of both geographical advantages and political pragmatism critically examine करो Magadha empire रो emergence टा is an imperial power जेतेबेले से माने emerge कले त as a कोथ पे emerge कले दीटा फैक्टर रहउची गोटे होची geographical advantage ताको पाके थिला आ गोटे political pragmatism ताको पाके थिला आ ए जिंसटा critically examine करिवा को कोआ जाईची introduction मगध एम्पायर विषय रे अल्प किसी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देबे जेमति कि मगध एम्पायर टा जो रहिची सेटा एंशिएंट रीजन लोकेटेड एबे कोन एबे सेटा साउथ बिहार जो मगध रीजन आगुर को जातला एबे सेटा साउथ बिहार 6th to 4th सेंचुरी BCE रे ए एम्पायर फॉर्म हेतिला
So it is এটা বহুত powerful ଆଉ eventually it gave rise to big empires like the Nanda. It became very powerful and eventually gave rise to big empires like Nanda and Mauryan dynasties. Although geographical advantage तांको पाखरे थिला, geography तांको गोटे better start देइथिला, मगधर rise सेटा केवल geographical advantage पाई नुहे, मगधर rise पछरे smart leadership रहिछि, smart leadership, strong kings and clever political strategies रहिछि. এই सब फैक्टर मगध को फर्स्ट पावरफुल एम्पायर इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री करिछि. फर्स्ट हमें देखिबा ताको जियोग्राफिकल एडवांटेज कोन थिला. जियोग्राफिकल एडवांटेजेस कोन थिला. मगधर नेचुरल फीचर्स जेमति की फर्टाइल लैंड माने गैंगेटिक प्लेन्स, गैंगेटिक प्लेन्स रिच सॉइल केमिति हेल्प कला. इट हेल्प्ड इन ग्रोइंग मोर फूड बेसी ग्रो हैला तो सेटा कोन कला गोटे फूड सरप्लस क्रिएट कला जोटा की सपोर्ट कला गोटे लार्ज पॉपुलेशन जोटा की स्ट्रॉन्ग आर्मी को रिसोर्स देला. देन आयरन डिपोजिट्स केमती हेल्प कला. नियर बाय एरियाज जेमती की राजगीर बा गया सेठी आयरन थिला. तो आयरन टा यूजफुल कोथि पई हैला इन मेकिंग वेपन्स आउ फार्मिंग टूल्स. तो सेथरे कोन बढ़िला, सेथरे भी मिलिटरी स्ट्रेंथ बढ़िला. रिवर्स जियोग्राफिकल एडवांटेजेस रे रिवर्स भी आसुची. रिवर्स जेमती मगधटा सराउंड हेतिला को रिवर द्वारा गंगा, सोन एंड चंपा. तो रिवर्स रे सराउंड हेला माने एथिरु कोन हबो, एथिरे ट्रेड आउ ट्रांसपोर्टेशन इजी हेला. ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन इजी हेला. देन नेचुरल प्रोटेक्शन. नेचुरल प्रोटेक्शन रो कोन हैला, जो सिटीज रहिला राजगृह जोटा की हिल्स द्वारा सराउंडेड अछि आउ रिवर्स, इट मेड देम हार्ड फॉर एनिमीज टू अटैक. सेकेंड नेक्स्ट स्लाइड रे देखिबा एलाबोरेटिवली. सेकेंड कौन रहा, स्मार्ट पॉलिटिकल लीडरशिप बा प्रैग्मेटिज्म. स्मार्ट पॉलिटिकल लीडरशिप केमिति हेल्प कला मगध को राइज करिबारे. मगध किंग इन जनरली से माने बहुत क्लेवर आउ स्ट्रेटेजिक थिले. ठीक अछि. तो ताले फर्स्ट रहिबे स्ट्रॉन्ग रूलर्स. एटा गोटे मेजर फैक्टर. रूलर्स जेमति कि फॉर एग्जांपल बिंबिसार, अजातशत्रु एटसेट्रा. महापद्मानंद ए माने कोन कले एक्सपांड कले तंगर किंगडम थ्रू वार्स, मैरिजेस, डिप्लोमेसी. देन मैट्रिमोनियल अलायंसेस. जो मैट्रिमोनियल अलायंस रहला बिंबिसार जेमति कि गोटे पावरफुल फैमिली कोसाळ आउ लिच्छावी रे से मैरिज करिथिले टू बिल्ड ट्रस्ट एंड अलायंस. to promote for trust and alliance. Military innovation. Third reason होची military innovation.
अजातशत्रु फॉर एग्जांपल जेमती अजातशत्रु से कौन करथिले से न्यू वॉर मशीन्स यूज करथिले न्यू वॉर मशीन्स यूज करथिले फॉर एग्जांपल कैटापल्ट्स आउ ट्रेन्ड एलिफेंट तो एटा मगध को कौन दउतला गोटे एज दउतला इन बैटल्स देन सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन जो नंद डायनास्टी थिले नंद डायनास्टी जो थिले से माने गोटे स्ट्रांग गवर्नमेंट सिस्टम क्रिएट करथिले आउ से माने कोन करथिले से माने कलेक्ट करथिले टैक्सेस आउ से टैक्स को लगौथिले गोटे बेटर आर्मी बिल्ड करिया रे फिफ्थ पॉइंट एलिमिनेटिंग राइवल्स मगध बहुत पावरफुल रीजन जेमति कि कोसाळ हेगला अंग अवंती कोसाळ अंग अवंती आपको डिफीट करथिले सो इट ब्रॉट मच ऑफ नॉर्थ इंडिया अंडर इट्स रूल एटा हेगला मगध किंग मानकर क्लेवर आउ स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आउ स्मार्ट पॉलिटिकल लीडरशिप रे आउ इंक्लूड रहउची जोटा कि इकोनॉमिक एंड कल्चरल स्ट्रेंथ भी तांका पाखे थिला इकोनॉमिक नेक्स्ट स्लाइड देखिया इकोनॉमिक एंड कल्चरल स्ट्रेंथ अर्बन ग्रोथ एंड ट्रेड urban growth and trade support for religions urban growth and trade कोन होतला cities like जेमति पाटलिपुत्र हे गेले से माने बहुत बिजी सेंटर दे बिकेम बिजी सेंटर फॉर बिजनेस एंड गवर्नेंस तो से माने अट्रैक्ट कोन करथले ट्रेडर्स आर्टिस्ट स्कॉलर्स आउ सपोर्ट फॉर रिलीजन रे कोन हला किंग्स से माने कोन करथले सपोर्ट करथले बुद्धिज्म को जैनिज्म को फॉर एग्जांपल बिंबिसार हे गेले अशोका हे गेले तो सेटा कोन होतला इंक्रीज करथला व्हाट इंक्रीजिंग मोरल रिस्पेक्ट एंड इंटरनल पीस इवैल्यूएट जदि करिबा ओवरऑल सिनेरियो सेत बळर इवन दो अवंती आउ काशी रो सिमिलर ज्योग्राफी थिला दे डिडंट राइज लाइक मगध से माने मगध भलिया एतटा राइज कलेनी मगध राइज कला एमानक पाखरे भी ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस थिला किंतु एमाने मगध भलिया राइज न करिवार रीजन रहउची काहेकि ना पॉलिटिकल स्मार्टनेस और जो स्ट्रांग लीडरशिप मगध पाखरे थिला सेटा गोटे मेजर डिफरेंस क्रिएट कला एमानक भितरे हाउएवर किसी स्कॉलर कहचंदी कि नंद रूल हेवी टैक्सेशन आउ स्ट्रिक्ट कंट्रोल मेड पीपल अनहैप्पी बट तो सेटा कोन हैला नंद रूलर्स मानक परे चंद्रगुप्त मौर्य आसीगले चंद्रगुप्त मौर्य आसीगले with the help of Chanakya to take over and start a new dynasty. Conclusion केमती करिवे conclude केमती करिवे आंसर को एमती लिखिबे कि मगध राइज वाज नॉट जस्ट मगधर जो राइज थिला इट वाज नॉट जस्ट लक or not just geography it was because of visionary rulers smart strategies and good use of natural resources तो एटा हमको कौन टीच करूची इट टीच हमको एटा सिखौची कि स्ट्रांग एंड वाइज गवर्नेंस कैन टर्न ज्योग्राफिकल चांस इनटू अ रियल ग्रेटनेस नेक्स्ट क्वेश्चन पचार से सिग्निफिकेंस ऑफ नंद डायनास्टी डिस्कस करबा को इन लेइंग द फाउंडेशन ऑफ व्हाट इंपीरियल गवर्नेंस इन नॉर्दर्न इंडिया रू 321 BCE रे नंद डायनास्टी कौन करथिले
मगध को रूल करुले जस्ट बिफोर द फेमस मौर्यन एम्पायर बिगन तापरे दे आर ऑफन इग्नोर्ड एंड फॉरगटन बिकॉज मौर्यस कौन कले बहुत फेमस हो गले नंदस एते इंपोर्टेंट रहिलेनी किंतु नंदस स्टिल वेरी इंपोर्टेंट थिले दे प्लेड अ की ट्रेडिशनल रोल मीनिंग दे एक्टेड एज ए ब्रिज बिटवीन small kingdoms and large empires से माने बहुत सारा चेंजेस आनी थिले कोथरे एडमिनिस्ट्रेशन रे इकोनॉमी रे मिलिटरी रे जोटा कि मौर्य मान को हेल्प कला दे हेल्प द मौर्यस बिल्ड देयर एम्पायर इजीली लेटर फर्स्ट थिंग इन सिग्निफिकेंस होची सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आ माने होची दिस मीन्स ब्रिंगिंग ऑल पावर अंडर वन अथॉरिटी जो भी किंग की जहाँ भी ऑफिशियल रहिले गोटे सिंगल अथॉरिटी अंडर रे सब जगह पावर कंसंट्रेशन को सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहंदी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को थ्रू हैला स्ट्रांग ब्यूरोक्रेसी and uniform tax system through strong bureaucracy रे कोन ला नंदा माने कोन क्रिएट करथले फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट से माने कोन करथले इंडिया रे क्रिएट करथले आ से माने स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ ऑफिशियल थिले टू कलेक्ट टैक्सेस हे गला मैनेज द आर्मी और टू लुक आफ्टर द स्टेट बुझेला यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम अंडर कौन है दे आर लाइकली हैड अ स्टैंडर्ड मेथड ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस ताकर गोटे स्टैंडर्ड मेथड थिला कलेक्टिंग टैक्स कलेक्ट करियारो फ्रॉम लैंड और ट्रेड आउ से माने मोर इनकम दे गेव देम मोर इनकम टू रन द किंगडम्स एफिशिएंटली सेकंड मिलिटरी एक्सपेंशन एंड कंट्रोल मिलिटरी एक्सपेंशन एंड कंट्रोल मिलिटरी एक्सपेंशन एंड कंट्रोल ले कोन हैला नंदा माने फोकस कले हेवीली कहा ऊपर बिल्डिंग अ स्ट्रांग आर्मी टू कंट्रोल एंड एक्सपैंड देयर किंगडम ह्यूज आर्मी माने जेम कि 2 लाख फुट सोल्जर्स इन्फेंट्री कैवलरी 3000 वार एलिफेंट्स एई भली तो एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर पई एटा बहुत यूजफुल थिला थर्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड वेल्थ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड वेल्थ से माने बहुत रिच एंड यूज से माने कौन कले ता मनी को वाइजली यूज कले टू स्ट्रेंथन द स्टेट कहा थ्रू रू रिच ट्रेजरी एंड अर्बन ग्रोथ एंड ट्रेड थ्रू फोर्थ तांका पारे कोन थिला एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन थिला एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन थ्रू से कौन कले से माने चेंज कले हाउ सोसाइटी व्यूड हु कुड बिकम अ किंग किए किंग हबो आ सोसाइटी से प्रोसेस को को भली भाबरे देखे से माने से जिंसटा को चेंज कले नॉट फ्रॉम क्षत्रिय वर्ण नंदस वर बिलीव्ड टू बी फ्रॉम द शूद्र कास्ट एटा गोटे प्राइम एग्जांपल आ गोटे प्रोटो ब्यूरोक्रेसी प्रोटो ब्यूरोक्रेसी कौन जिते बड़े कि डिटेल्ड रेकॉर्ड मिसिंग अच्छी या ऊपर अर्ली साइंस एटा देखा जाइए कि जो ऑर्गेनाइज्ड तांको बेले ऑर्गेनाइज्ड मिनिस्ट्रीज थिला ऑर्गेनाइज्ड मिनिस्ट्रीज और ऑफिशियल्स थिले आउ ए जिनसटा को नंदा माने इंट्रोड्यूस करथिले सिस्टम रे एंड दे कंटिन्यूड बाय द मौर्यस फिफ्थ इन्फ्लुएंस ऑन द मौर्यन एम्पायर
इन्फ्लुएंस ऑन द मौर्यन एम्पायर कौन थिला फाउंडेशन ऑफ मौर्यस करो फाउंडेशन फर्स्ट ऑफ ऑल जिते चंद्रगुप्त मौर्य टुक ओवर कले सी कौन कले ना बहुत सिस्टम जोटा कि नंद मान टाइम रे ऑलरेडी बिल्ट थिला से ताको बजाय रखिले लाइक टैक्स कलेक्शन हे गला मिलिटरी सेटअप हे गला सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन हे गला से माने ताको कंटिन्यू कले एंड रोल ऑफ चाणक्य रोल ऑफ चाणक्य बहुत लोक एथिरे अनहैप्पी थिले नंद मानक प्रति स्पेशली बिकॉज ऑफ हाई टैक्सेस एंड स्ट्रिक्ट रूल आई डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड्स एटा अलाउ कला चाणक्य को ये गोटे वाइज एडवाइजर थिले से टाइम रे टू सपोर्ट चंद्रगुप्त मौर्य आउ ये दी जण मिसिकी कौन कले दे ओवरथ्रू द नंदस तो कंक्लूड केमती करिवो कंक्लूजन रे इंक्लूड करिवो कि नंद डायनास्टी से माने एते फेमस नथिले टेम्पल आउ इंस्क्रिप्शन पाई दे मे नॉट बी फेमस फॉर टेम्पल एंड इंस्क्रिप्शन किंतु ए माने बहुत इंपोर्टेंट थिले इन शेपिंग द इंडियन हिस्ट्री केमिति जेमति कि प्रीवियस स्लाइड रे मु कहली सेंट्रलाइज्ड रूल रे मिलिटरी स्ट्रेंथ रे वेल्थ मैनेजमेंट हे गला एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हे गला नुआ बिल्ड करिया से मानकर गोटे स्ट्रांग बेस थिला जोटा कि मौर्यन एम्पायर को गोटे स्ट्रांग बेस प्रोवाइड कला फॉर्म बारे दे प्रूव्ड दैट इवन विदाउट रॉयल ब्लड स्मार्ट एंड पावरफुल लीडरशिप could change the history. Ninth question कही कि गोटे गैप रहुची एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट भितरे वुमेन मानकर इन को फील्ड इन स्टेम फील्ड जोटा कि इट रिफ्लेक्ट्स द डीपर सोसाइटल एंड इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस और ये गैपटा कौन शो करुची जो डीपर सोसाइटल और इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस रही वुमेन मान प्रति एटा को से शो करुची डिस्कस एटा करो कि कौन रीजन रहुची ए गैप पछरे एंड वे फॉरवर्ड गोटे दियो हाउ टू इंप्रूव वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इन द स्टेम इंडिया बहुत भल करछि वुमेन मानक एजुकेशन रे नाउ डेज स्पेशली इन द स्टेम फील्ड्स स्टेम माने कोन एस फॉर साइंस टी फॉर टेक्नोलॉजी ई फॉर इंजीनियरिंग एंड एम फॉर मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग टू गोटे गवर्नमेंट सर्वे हेतिला सर्वे ना होछि AISHE 2021 टू 22 आ ए सर्वे द्वारा देखा गला कि 43% ऑफ जो स्टेम ग्रेजुएट्स रहउछंती से माने एबे का टाइम रे से माने होछंती वुमेन जोटा कि हाईएस्ट वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड किंतु इशू एटा रहउची हियर इज द इशू कि ओनली 15% और लेस ए मानको वुमेन मानक भितरु से माने स्टेम अंडर रे वर्क करूछंती they work in STEM jobs especially in higher position like leadership or research तो एटा कौन शो करछि एटा गोटे गैप शो करछि between education and employment जोटा कि कॉज करूछि के जोटा कि कॉज करूछि डीप सोसाइटल कल्चरल and institutional problems not just lack of education तो सोसाइटल चैलेंजेस कौन रहउछि societal challenges रोजे first of all gender stereotypes society often से माने एटा भाबन दे कि साइंस और टेक से माने सेगुडा होची मेंस फील्ड और गर्ल्स माने दे आर नॉर्मली डिस्करेज्ड फ्रॉम परसुइंग सच कैरियर स्पेशली इंजीनियरिंग हे गला कि कोर टेक्नोलॉजी हे गला फैमिली प्रेशर एंड मैरिज फैमिली प्रेशर एंड मैरिज तो वुमेन माने एक्सपेक्ट करते कि मैनेज टू मैनेज द होम टेक करियर ब्रेक्स और टू अवॉइड द रोल्स माने रिलोकेट करिया मैरिज एगुडा सब प्रॉब्लम रहउची लैक ऑफ रोल मॉडल्स बहुत कम फेमस वुमेन अछंती साइंटिस्ट और लीडर्स जो जहा को देखि कि यंग गर्ल्स इंस्पायर हेबे कि एज अ मेंटर एक्सेप्ट करिवे so there is a lack of role models second institutional
and workplace barriers. Institutional and workplace barrier कौन रोजी? Discrimination रोजी workplace रे. First of all, discrimination at workplace. जेतेबेले गोटे woman, even when women are in STEM jobs, STEM under रे से job कले भी से मानकु lower pay मिलुची, payment मिलुची, salary मिलुची than their male counterparts, fewer promotion होची, मेल मान को बेसी प्रमोशन मिलुची एंड आर ऑफन एक्सक्लूडेड, इंपोर्टेंट डिसीजन मेकिंग रु भी तांको एक्सक्लूड रखा जाउची, तांको बाहर रखा जाउची, इंपोर्टेंट डिसीजन मेकिंग. सेकंड, अनफ्रेंडली वर्क कल्चर. अनफ्रेंडली वर्क कल्चर, वर्क प्लेस गुड़ा स्पेसिफिकली दे आर मेल डोमिनेटेड, आ लॉन्ग वर्स रहउची, फ्लेक्सिबिलिटी रहउनी टाइमिंग रे, सो एटा वुमेन मानक पई हार्ड होउची टू कंटिन्यू. देन पोस्ट एजुकेशन ड्रॉप आउट, एटा भी गोटे बैरियर. केमिति बहुत वुमेन कोन करछन से माने स्टेम अंडर एजुकेशन से माने कंप्लीट करूछन, किंतु तांको इंटर्नशिप मिलु नाही. They don't find internship or jobs or career guidance. तो से ता फल रे कोन होची, they drop out before entering the workforce. Last, less research support. फीमेल रिसर्चर्स माने कौन करछन्ती, लेस फंडिंग पाउछन्ती. फीमेल रिसर्चर्स दे गेट लेस फंडिंग, जोटा कि तांको ग्रोथ को एकेडमिक्स और साइंटिफिक इनोवेशन रे डिक्रीज करूची. आ ये प्रॉब्लम रो वे अहेड कौन हवा दरकार? व्हाट शुड बी द वे अहेड? व्हाट शुड बी द सॉल्यूशन? First, the solution थिबा दरकार in policy and institutional support. जेमति कि return to work programs. रिटर्न टू वर्क प्रोग्राम्स जोड़ा कि फेलोशिप टू प्रमोट फेलोशिप और प्रोग्राम वुमेन मानक पाई जो माने करियर ब्रेक से माने नहीं सारछन, फॉर एग्जांपल मैटरनिटी, तांको पे गोटे प्रोग्राम रन हबा दरकार, रिटर्न टू वर्क प्रोग्राम. सेकंड, रिजर्वेशन फॉर वुमेन. रिजर्वेशन फॉर वुमेन हवा दरकार कोथरे, स्पेशल इंसेंटिव्स भी दवा दरकार इन रिसर्च फैकल्टी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. थर्ड, जेंडर फ्रेंडली ऑफिसेस. जेंडर फ्रेंडली ऑफिसेस जमती कि फॉर एग्जांपल सेफ ट्रैवल हेगला, डे केयर, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स एगुड़ा सब प्रोवाइड करिया दरकार, जोड़ा को आज जेंडर फ्रेंडली वर्क कल्चर को मानक पई, वुमेन मानक पई. सेकंड, एजुकेशनल एंड सोशल रिफॉर्म्स हवा दरकार. एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म्स ले कोन हबो, आ अंडर स्टेम एनकरेजमेंट, स्कूल रु ही स्टेम एनकरेजमेंट हवा दरकार. स्टेम एनकरेजमेंट फ्रॉम स्कूल, जेमति कि जेंडर न्यूट्रल लर्निंग हेगला, कोडिंग क्लब्स, रोबोटिक लैब्स रे स्कूल फ्रॉम द स्कूल इटसेल्फ स्टेम अंडर रे एजुकेशन और जॉब पाई की एनकरेजमेंट हवा दरकार. देन आउ सोशल रिफॉर्म्स रे कोन आसी, मेंटरशिप प्लेटफॉर्म्स. मेंटरशिप प्लेटफॉर्म्स स्ट्रेंथनिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक जेमति विज्ञान ज्योति प्लेटफॉर्म हैला, फॉर एग्जांपल विज्ञान ज्योति प्लेटफॉर्म हैला, से माने मोटिवेट करछन्ती गर्ल्स मान को टुवर्ड्स स्टेम. गति प्लेटफॉर्म्स से माने इंस्टीट्यूशन को बिकम जेंडर इंक्लूसिव याकू प्रमोट करछन. तो एभलिया प्लेटफॉर्म्स रो स्ट्रेंथनिंग हेले कोन हबो, वुमेन एम्पावरमेंट बढ़िबो. देन मेंटरशिप प्लेटफॉर्म पर कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी.
कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी आसे दरकार जेमती बहुत गुडे कंपनी अछि से माने जेंडर ऑडिट्स करंती एंड रिपोर्ट द डाइवर्सिटी डेटा कि केते मेल अछंती केते फीमेल वर्कर्स अछंती जेंडर ऑडिट थ्रू जाना पड़े एंश्योरिंग वुमेन आर हायर ट्रेन्ड एंड प्रमोटेड कंक्लूजन रे कोन कोन इंक्लूड रहइबो ए इश्यूटा it is not just about women, okay, it is about India's growth. आउ जदि women माने STEM रे properly support पाइले, it will increase innovation, it will also make the workplaces diverse and the economy रे फास्ट ग्रोथ आसीबो ठीक अछि सो जेते बळे कि गोटे सोशल रिस्पांसिबिलिटी आउ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भीतर ए जो गैप टा रहउजी एटा जदी क्लोज हे जिवो with what with right policies social awareness and infrastructure India can lead the world in having a truly inclusive and powerful STEM workforce. Last question. India's recent long-term fertilizer import agreement with Saudi Arabia is seen as a strategic. India रो गोटे long-term fertilizer import agreement sign करछि India का संगरे Saudi Arabia संगरे जोटा कि गोटे strategic step हिसाब रे देखा जाउछि गोटे permanent step हिसाब रे देखा जाउछि towards what towards ensuring agricultural and food security. तो briefly discuss करियो कहिछि significance कार significance ही agreement रो in context of India रो fertilizer dependency and geopolitical interests. IR question. Introduction रे you should address India agricultural sector एबे भी कौन रही ची India agricultural sector एटा एबे भी heavily dependent रही ची कहा ऊपरे fertilizers ऊपरे especially DAP कहा को कहा जाए डाईअमोनियम फॉस्फेट जोटा कि essential for what essential for plant growth. तो currently 60% इंडिया रो DAP रहउजी सेटा imported आ गोटे big part comes from Saudi Arabia. 2024 और 25 रे कोन हितला इंडिया इंपोर्ट करतला 1.9 million MMT 1.9 million metric tons of DAP from Saudi Arabia which is 17% more than previous year. तो increase होची import इंडिया रो साउदी अरेबिया ठू कहारो फर्टिलाइजर्स रो तो न्यूज रे कोन पई अछि जुलाई 2025 रे कोन हैला इंडिया गोटे 5 year एग्रीमेंट साइन करिछि साउदी अरेबिया संगरे कोथि पई टू सप्लाई 3.1 million metric tons of DAP every year. तो एटा शो करूछि कि इंडिया कोन करूछि इंडिया प्लान करूछि गोटे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी फर्टिलाइजर सप्लाई रे गोटे लॉन्ग टर्म पई कि गोटे स्टेबल सोर्स जहा थ्रू रु इंडिया इंपोर्ट करिवो फर्टिलाइजर टू प्रोटेक्ट एग्रीकल्चर फ्रॉम ग्लोबल अनसर्टेनिटीज. It will reducing fertilizer dependency. क्वेश्चन रे पचारथिला कि एग्रीमेंट रो सिग्निफिकेंस टा को दर्शाइबा को इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया रो फर्टिलाइजर डिपेंडेंसी और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट. तो फर्स्ट डिस्कस करिबा कि केमिति फर्टिलाइजर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करा जाई परिबो बाय डाइवर्सिफाइंग ऑफ सोर्सेस डाइवर्सिफिकेशन of sources. एथिरे कोन हो इंडिया फर्टिलाइजर पई इंडिया डिपेंडेड अ लॉट ऑन चाइना फॉर फर्टिलाइजर्स आगुरु किंतु एबे कोन करछि इंडिया रेस्ट्रिक्ट कर देछि एक्सपोर्ट को इंडिया फेस कला प्रॉब्लम. तो जेतबे ये साउदी अरेबिया रो इंपोर्ट करबो इंडिया एठी कोन करछि गोटे पर्टिकुलर कंट्री ऊपर डिपेंड करूनी से डाइवर्सिफाई करूछि तार सोर्स को ग्लोबल अनसर्टेनिटीज रे जोडा कि काम रे आसीबो. देन ensuring
seasonal supply, ensuring seasonal supply. Fertilizers need कोथि पाई की fertilizers are needed just before the crop season, जेमती कि रबी crop season हेगला, खरीफ season हेगला, तो गोटे stable source थिले कि tension एते नथिबो कि fertilizers केमती आसीबो, food security, food problems हेजिबो without fertilizer. तो ए deal कोन करबो, ए deal गोटे stable timely supply provide करिवो, timely supply provide karibo, helping farmers and preventing last minute shortages. Second, improving India and Saudi relations. India and Saudi Arabia relations भी एतरे improve होगा, strong होगा. केमिति कहना beyond energy ties. This is a beyond energy tie. एतरे fertilizers include अछि. Oil और energy बाद भी गोटे जिनस एमिति include अछि जो थरे कि दीटा country भितर bilateral relation improve होछि, जोटा कि होछि fertilizer. Now they are expanding to include agriculture. आगुरु कोन थिला, आगुरु केवल oil and energy थिला, एबे से माने agriculture को भी तांकर जो relation टाको expand करिसंदी, which strengthens economic and strategic relations. Scope for investment. स्कोप फॉर इन्वेस्टमेंट रे कोन होची, जेमति कि इंडियन गवर्नमेंट कंपनी जो पीएसयूज रहले से माने कोन करबे, से माने एबे साउदी रो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री रे, साउदी अरेबिया रो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री रे से माने इन्वेस्ट कर परिबे, आगुरु करि पर नथले. एंड साउदी कैन इन्वेस्ट इन इंडिया. एटा कोन करिवो, मोर इन्वेस्टमेंट, ग्रेटर द इन्वेस्टमेंट, ग्रेटर द जॉब क्रिएशन and business बढ़ियो and mutual growth for both countries. Third, economic benefit कोन रहउची, economic benefit जेमति कि price stability. प्राइस स्टेबिलिटी हे गला. फर्टिलाइजर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट थ्रू किनिया रे कोन होउची, it helps in fixing the prices for some time. धर 5 वर्ष जाय कि फर्टिलाइजर एटा दरकार, तो एग्रीमेंट स्टार्टिंग रे ही प्राइस टा फिक्स थिबो. 5 इयर्स कि ईयर ऑन ईयर जो इन्फ्लेशन ऊपर नीचे जोटा होउची तो सेटा अफेक्ट करबनी. सो इट फिक्स द प्राइसेस फॉर सम टाइम. इट इंड्यूसेस प्राइस स्टेबिलिटी. तो एटा को माने को प्रोटेक्ट करछि, इंडियन फार्मर्स माने को प्रोटेक्ट करूछि फ्रॉम सडन प्राइस हाइक्स इन द ग्लोबल मार्केट. Second, better subsidy management. बेटर सब्सिडी मैनेजमेंट केमती होची, इंडिया बहुत स्पेंड करछि एक्चुअली फर्टिलाइजर सब्सिडी रे, जोटा कि प्राइसेस को लो रखुची फार्मर मानक पई. जदि इंडिया को चीपर आउ स्टेबल फर्टिलाइजर इंपोर्ट मिली जाए तो गवर्नमेंट कोन करिवो, गवर्नमेंट जोटा से सब्सिडी रे स्पेंड करतला ताको गवर्नमेंट सेव करि परिवो ऑन सब्सिडीज. वे फॉरवर्ड रे कोन इंक्लूड करिवे, एक्सपैंड टू अदर फर्टिलाइजर्स. ए एग्रीमेंट जोटा ओनली डीएपी को नहीं कि सेटा जदि अदर फर्टिलाइजर को एक्सपैंड कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल यूरिया हे गला, पोटाश हे गला, इट विल बिल्ड import of such fertilizers. Second, joint research and development for better fertilizers. इंडिया और साउदी अरेबिया से माने सांग ही कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से माने वर्कआउट करि परिबे टू क्रिएट फर्टिलाइजर्स जोटा कि इंडिया रो सॉइल और क्लाइमेट पई कि पर्टिकुलरली सुइटेबल. तो एथिरे इंप्रूव कोन हबो, इट विल इंप्रूव सॉइल हेल्थ एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी. इंडिया रो सॉइल आउ क्लाइमेट को नहीं कि जदि पर्टिकुलरली टेलर्ड थिबो फर्टिलाइजर्स, इट विल इंप्रूव द सॉइल हेल्थ एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी.
build stronger infrastructure. इंडिया को दरकार गोटे स्टोर जेमती कि स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर एई क्षेत्र रे कोन गोटे प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी जेमती कि स्टोरेज फैसिलिटी फर्टिलाइजर को स्टोर करिया पई ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट एगुड़ा दरकार टू मेक श्योर फर्टिलाइजर रीच फार्मर्स ऑन टाइम विदाउट वेस्टेज. कंक्लूड केमती करिवे आंसर को कंक्लूजन शुड इंक्लूड कि एटा गोटे जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हेची सऊदी अरेबिया संगरे एटा गोटे स्मार्ट एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन बाय इंडिया आ एटा इंडिया को केमिति हेल्प करिवो. इट विल हेल्प इंडिया इन गेट स्टेबल फर्टिलाइजर सप्लाई, reduce dependency and strengthen the foreign relations and cost and subsidies को control करी हबो. Overall it will make India's agriculture safer, stronger and future ready, ensuring food security for the nation. सब जगह क्वेश्चन डिस्कशन सरला. That is it for today. Thank you.